ठाकुर, ये वही जगह है जहाँ हमारी इज्जत खराब हुई थी। उस तुम लोग देख रहे थे। देखो मैं, देखो कहाँ है तुम्हारा, कहाँ है? आज रोहित 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 ठीक नहीं आ रहा है। कांटे द सन भी जा रही थी, उसके शरीर को सबके सामने छलनी। I'll just replay the video. या प्लीज। और वॉल्यूम मुझे कम लग रहा है कि कम ही है? कम है। कम है ना? या ठाकुर, ये वही जगह है ना जहाँ हमारी इज्जत खराब हुई थी। और तुम लोग देख रहे थे। देखो मैं, देखो कहाँ है तुम्हारा गुरुजी? कहाँ है? कहाँ जाके छुपा है? बुलाओ उसे। वो तो आज भी वस्त्रहीन न्याय की गुहार लगा रही है, सड़कों पर घसीटी जा रही है। उसके शरीर को सबके सामने छलनी छलनी किया जा रहा है। धूप, बारिश और तानों को सहते हुए अत्याचारियों को दंडित करने की वो मांग कर रही है। और आज भी दुर्योधन उससे ये कहने का साहस कर रहा है कि बताओ कब, कैसे और कहां हुआ। मैंने कहा था ना, अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। Just leave right now. No. अब और कुछ नहीं रहा हमारे बीच। I've never thought about anybody else like I think about you. I've never fallen in love with a man. I've never liked a man. Maybe it's this. Maybe it is this. अपने आप को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम दोस्तों में मेरी पोजीशन खराब करती हो। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बोलना चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। वही महेंद्र जो दोस्तों में दब्बू सा बना फिरता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। एक दिन ताव में आकर वो सावित्री का सिर जमीन पर रगड़ता है। मिस्टर ब्राउन मुझे बहुत देर तक घूरते रहे, और क्यों ना हो, वो उनकी जगह थी, मैंने दखल कर ली। मैं लिखती रही और वो बैठकर इंतजार करते रहे कि अब भी चीखेगी कॉकरोच, चप्पल मारेगी या लाइट जला देगी। पर उन्हें क्या पता कि मैं और वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मेरी बच्ची, तेरा मुंह अपने हाथ से बंद कर देते थे, हाँ, ताकि मेरी चीख बाहर ना निकले। हाँ, जो मैं चिल्लाती थी, उस दर्द में, उस पेन में, जो मैं चीखती थी। फिल्म का विलन सर हीरोइन को लेकर हेलीकॉप्टर में भाग रहा है और फिल्म का हीरो हेलीकॉप्टर के पीछे शहर की गलियों से भाग रहा है और जंगल तक पहुंच जाता है। सर, हीरो अपना जंगल में पहुंच गया, लेकिन हेलीकॉप्टर अब तक नहीं पहुंचा। सर, अब हीरो को एक नारियल का पेड़ दिखाई देता है और हीरो उस नारियल के पेड़ पे चढ़ जाता है। उतने में ही सर,
उतने में ही विलन हीरोइन को लेकर उस नारियल के पेड़ की तरफ से गुजरता है और हीरो को तभी एक आइडिया आती है सर। हीरो तुरंत जाके नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ता है और नारियल पानी पीता है और अब वो नारियल वो जमीन पे पटकता है जोर से। क्यों ये दिल के दरवाजे खोल रहा है? क्यों ये बीती हुई बातों को नए सिरे से उजागर कर रहा है? क्यों ये समंदर की गहराई में दफनाए हुए जज्बातों को फिर से आसमान में उड़ने के ख्वाब दिखा रहा है? और मैं इसके शब्दों के जाल में फंसता ही जा रहा हूं। अगर मेरे मन इतने ही कमजोर थे तो मैंने ये मुश्किल राह क्यों चुनी? प्रेग्नेंट होना, एक बच्चे को कैरी करना कौन सी बड़ी बात है? बस थोड़ी सी तो तकलीफ होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। नहाते वक्त बाल झड़ना, फेस पे बॉयल, बॉडी पे रैशेस, हजारों इंजेक्शन, बस। कभी कभी तो हंसते रोते हुए यूरिन निकल जाता है क्योंकि ब्लैडर बेबी की वेट को होल्ड नहीं कर सकता। अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि वो फिट नहीं होते। पिछले हफ्ते जब आपके पापा जी ने पूछा था why did you go around the sacred fire with her 7 times, you said for the exercise. You're funny. You are funny, Sanjeev. You are funny. Lovely. Very nice. Yeah, hi. So these were the more amazing performances you saw now and are the ones put up by the participants of Monologue by an actor contest. The contest is an initiative of Rock with DR YouTube channel. DR stands for Dinesh Raheja. And it's in collaboration with Puri Foundation. Well, friends, I'm Sahil Chadda. I'm an actor and a filmmaker by profession. I have done I do voice acting for Hollywood films as well. I've done more than 50 odd films. And the latest ones, my voice acting performances are with Marvelous Mrs. Maisel as well as Money Heist. And of course, I have been working in this industry for more than decades. My films which did extremely well, my claim to fame was Lal Dupatta Malmalka, which established me as an actor. And of course, it was followed by a lot of other work on television and Bhagavan, where I played Mr. Bachchan's son. और बड़ा अजीब सा महसूस होता है जब मुझे इंट्रोड्यूस कराया जाता है इवेंट्स में और बोला जाता है कि अमिताभ बच्चन के नालायक बेटे हैं. So that became my introduction. Like my friend Shishir says, there's so many things we hold in common. And I would like to welcome today's judges. One is, she's a beautiful lady. And well, I worked with her. I don't think she remembers because she used to walk the ramp. And I was backup dancer for her in one of the commercials. That BJ, Babu, Bhai, yes, Sonu, I remember. And you remember that too. And well, we've all come a long way. And Sonu, it's such a pleasure seeing you here today. You're looking as beautiful as possible. So Sonu ke liye, what can I say? I mean, she's done a fantastic job in a debut film where she won the Best Supporting Actor Award, Filmfare. Am I right, Dinesh? Yes, of course. And deservedly so. Absolutely. I feel, it was such a refreshing when she came on the screen. It was so refreshing at that time. And now also you look very pretty. And I believe you're doing lovely Punjabi films you're producing. Yeah, that's what Dinesh told me. Not Punjabi. I've made a Hindi film. It's a musical love story. Wow. Congratulations. And the other judge I would like to introduce is a very dear friend. I've always looked up to him as an actor. And I've done quite a few jobs with him on television. Mr. Shishir Sharma. He doesn't need an introduction. Shishir's performance, especially in Razi Dangal, was Talwar, right? That was amazing. It was just amazing.
And whenever I came across his performance, I made it a point to call him up and congratulate him for that. I look forward to working I would together like to again. add something. You Yeah. should see Shishir in City of Dreams. He's done one scene with Atul Kulkarni, where Atul Kulkarni treats him like a dog, and so You mentioned that to me. Yes, yeah, I have yet to his see it. humiliation, his self-disgust for not being able to stand up to it. It's amazing. He's got so many emotions in that scene. It was terrific, Shishir. Very But good. he is a fantastic actor. We all learn from him. I mean, I always feel, acting is nothing else but reacting. So if you have a great actor, you're performing a scene with, आपकी अपनी performance enhance हो जाती है, I feel, So besides that, the other judges, Nandita ji, where are you? Nandita Puri. She's here. Hello. She's around? Yeah. I can't see you. Puri, Nandita Puri. Okay, I can't see her. But anyway, let me just go ahead. So Nandita, where are you? Can you see me? Yeah. Oh, yes. Okay. Okay. Sorry, my phone is out of order. I'm using my son's phone and we are traveling back from Pune. So it's quite a mess, but I'm here. So welcome. Nandita, you know the others, you know Shishir, you know Sonu. Of course. Yeah. Hi, Nandita. Hi, and you're looking gorgeous. Let me tell you, Sonuji. Yeah, everybody's been telling us. Gorgeous. You haven't aged. You have to tell us the secret of not aging. इसी बात पे सीटी बनती है. बिल्कुल. But Nandina, you have to call Shishir handsome also. He's feeling very bad. No, Shishir, of course. He knows. You've got a gorgeous, two good-looking men. And you, the third one, Dinesh. How do you do that? So, yeah. So, let me just give a very brief introduction of Nandita ji. As you all know, she's an author, journalist, and late Mr. Om Puri's wife. But it is commendable that she has earned her own share of spotlight. She has penned some remarkable books. Om Puri, An Unlikely Hero, and more recently, Jennifer, one of the most, which is, covering one of the most important issues today, that is human trafficking. So welcome all the judges, and let's move ahead. Mishal is there. Mishal is supposed to be here. Supposed to be here. Yeah, I just check why he's not here. He's late as ever. Yes. Chala, can I move ahead, please? Well, let me just give a brief introduction on Mishal. Mishal is a very talented young actor, and he was known for his character Bhau in Lagi Tujhse Lagan. Datta Bhau. Yeah, and he's played a very important role in Nikhil Advani's Mumbai Diaries. Now, so I will share the contest. Can I go ahead, please, Dinesh? I shall share the contest rules, but before that, I will ask Renita Kapoor and Loni to perform their monologues, because they made a special request to let them perform first. Renita, over to you. Renita, ma'am. Hi, everyone. Can you hear me? Yes. Yeah. Hi. I'm sorry I had to keep my camera off. Sorry, all of you. I was not in the right frame of mind. Somehow gathered the courage to be here because I had a commitment. I just had a very, very unbelievable morning, and that's why I had to. I'm sorry, I'm not in the right frame of mind. Really sorry about that. Actually, after moving back to India, moving into my own apartment, I had kept a maid who's working for me for almost a year now. And she never told me that she has a daughter, which was revealed to me today. And 5 दिन से वो काम पे नहीं आई थी. So I was like, how it happens here. If you don't have house help, you go crazy, right? And I was just losing it. And I was like, नहीं आ रही है तो मैं किसी और को काम पे रख लूं. And suddenly the doorbell rang and I see her at the door after 5 days, and
I was like, where the hell were you? And to my surprise, she was carrying her, kid in her arms. And I was like, ye kaun hai? She's like, Didi, can I come in? Matlab, main andar aa sakti hu, of course. I mean, like, हाँ अंदर आओ, पर ये है कौन and what's going on? And the kid was sleeping. It was a girl, and so I just told her कि इसको लिटा लो पहले, सोफे पे लिटा लो, फिर बताओ मुझे तुम हो कहाँ यार? 5 दिन से घर का काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, and you're missing, and nobody's answering the phone, nobody's calling me back, and who's this girl? And the moment she put that girl down on the sofa with her face up, I can't get over that sight. She was around 3 years old, and her face was cut, ripped. It just froze me. I was like, what the hell is going on? I couldn't show her my tears. I somehow had to be stable, and I just asked her कि बात क्या है यार, मुझे बताओ तो सही, हो क्या रहा है? Then she broke down and she told me that that's her daughter, 3-year-old daughter. And 5 days back, she was raped by 2 men. Oh my God. I just cannot gather the fact, how the hell can anybody touch anybody like that? कोई किसी पे जबरदस्ती कर कैसे सकता है? And I can't tell you that sight when I saw that girl. Anyways, I felt so helpless, and poor thing, that lady was crying in front of that girl being raped, and she kept crying, she kept screaming for help, and nobody came to her rescue. She begged me कि वो चाहती है कि those men should be punished, and so thank God I have connections here. Otherwise, बिना connections के कुछ होता ही नहीं है. So we managed to file in a complaint, and it will be looked into, and I'll make sure these men are not spared. No matter what, no matter how far I have to go, I am not going to let them be spared. But it's so sad. I'm so sorry. Thank you. Oh, Performance. Oh my God, this is fantastic. absolutely. Superb, superb, superb. And ran straight into it, so you didn't get the idea. Yeah, absolutely, man. It was Very nice. quite touching. Renita, thank you very much. It was fantastic. Thank you, but let me share. It's a true story. Oh my God, that's not nice. Not with my helper, but a very dear friend of mine. It happened with her helper, and I witnessed it. So it's very close to my heart. Please take care. It was really overwhelming, I must say. Yes. Very sorry to hear that. Now, may I request? What were you saying, Sonu? It's very sad to know that things like this are still happening today. We've been hearing such good, nice things about Uttar Pradesh and how so much the system has changed and these guys are being punished, crime is being, is going, and now you've just broken that myth. And No, ma'am. Sonu, ma'am, it's actually happening. They are working very hard, and I shared this during my semi-finals video call. 1090. There's a unit of police here which is really working very hard. And this case that I'm sharing with you, it's around like 3 years back. Now things have really, really changed. They are getting much better. Yes, That's we do feel wonderful. much safer. Yeah. so glad to hear that. But thanks for highlighting this issue through the monologue. Very, thank you. Super.
Thank you, Vinita. Yeah, so I would request the judges to, please, besides Shishir, to pass the judgment as such. So Nandita, are you going first? You have to mark on 10. Yep. Okay. It was really overwhelming. For a moment, I thought, she was. I was totally taken aback. I thought, poor thing. In fact, I wanted to interject and tell her, why don't you take a break, calm down, and then come back and recite your Absolutely, lines. absolutely. I was on the same page. I really felt, okay, she should take a break and come back. I mean, she's narrating. Oh my God. And then I felt very stupid when I realized that was a monologue. So sorry. But like she said, it was a real incident, so I didn't think not so stupid at the end of the day. Although I cannot comment on Renita's monologue, I knew right from the very beginning. I've known her for very, very long, and I knew that this was a piece that she wanted to do. You know me too well. Yeah, please carry on. Sorry. Yeah. So, kindly give your marks. Sonu, would you like to say something? Yes, I do. I think, Benita, it was so real and you gripped all of us, You just got us by the, I think I was pretty choked up. Yeah. And I think that's really important because if you can get the feelings right in your monologue and you can grip your audience with it, I think that's tremendous. So well done, Benita. Thank you. Of course, I'm not happy about the subject that you chose, but definitely. But you'll have to mark her on 10. Yeah. So now I would request Loni ma'am to come. No, you have to mark her on 10. All of us right now. Oh, we have to declare that as a declare a mark? Yeah. Verbally. Yes. Okay. Obviously. I'm giving her a 9. Even I'm giving her a 9. Thank you. Dinesh kahan bhag gaya? Dinesh has disappeared. I'm sure he's going to give 10. He's looking for his glasses. I'm sorry, I'm now getting a chance to say hi to all of you. Hi, Sahil. Hi, Sonu ma'am. Couldn't talk to you guys before. Hi, Nandita ma'am. We've seen each other before. Yes, we have. Yes. I thought your last But that was brilliant. Thank you. I thought your last line will be, now I can't perform this monologue, so please excuse me. Commitment is a commitment. I would not back out, but thank you. Yes. I was expecting people to hear that line from Renita saying that, sorry, I'm a little too overwhelmed. This happened at home and I need to leave. Thank you so much. But I would have said, yeah. Please go, Renita, please go. So I've been made the scorer also because Sahil is saying he can't take so much pressure. I mean, read a script last minute and then give scores also. Arey Sahil, come on, yaar. अरे है ना इतना बढ़िया स्कोरर हमारे पास है ना इतना बढ़िया अरे मैं स्कोर ही लिखना भूल जाऊंगा मैथ्स तो अच्छी है लेकिन लिखूंगा तो मैथ्स करूंगा ना नहीं हो जाएगा वो मैं गिनती में आपको बता दूंगा याद दिलाना मुझे तो रेनिता को मिले हैं 27 वाओ नहीं एक और रह गया एक और बंदा रह गया किसको वोट और नो हाँ तो अभी साहिल को देना पड़ेगा क्योंकि मिशाल आया नहीं अभी तक साहिल मुझे 9 dude 9 okay. Thank you 9 for the 36 yes 9 for the 36 I think पहले 3 में से एक पोजीशन तो मिल ही जाएगा very nice आगे excellent चलते हैं thank you yeah thank you आपको जाना है रेनिता क्या आप रुकेंगे अभी मैं हूँ I'll stay for a while. Yeah, 15-20 minutes. My lips are sealed. Okay. So thank you so much, Renita. Wonderful. I think you have a very unusual name also. Thank you. Yes, I love my name. Thank you so much. It's a lovely name.
It's a lovely name. भाई मेरा नाम unusual नहीं है. नहीं सर. आपकी तरह खड़ूस है. पागल हो गया. No. Shishir, it's a very common Bengali अरे यार name. Nandita, please tell him. It's a No, Bengali name. it's a beautiful name and it's a very common Bengali name. Yeah, Shishir, it's a Tagorean name actually. But a lot of people must be calling you Sissy. Sissy बोलते हैं कि नहीं आपको Sissy? चलिए आगे. No, Shishir means dewdrops if I'm not mistaken. Yeah, absolutely. The morning ka os. Exactly, and I'm going to send you a song by Rabindranath Tagore on that. Please Wow, do. So sweet. Okay, can we move ahead? Yes, please. Okay, the next one is Loni ma'am. Where is she? She's there. She's in the car. Yeah, Okay. can you hear Rohit, me? please let her in. Yes, crystal clear. Oh wow! Hi. Hi, Welcome. hi everybody. Welcome, Good welcome. morning. Hi. Good morning, sister. Hello. Good morning, Nandini ma'am. Good morning, Sonu ji. Nandita. And good morning, Dinesh ji. Nandita. Yeah, I'm in the car too. I'm in the car. I am driving from Chicago to New York, and it's pouring outside. It's like Bombay. Exactly. Monsoon यहाँ भी पहुंच गया है. Wow. Thanks to the. You know, we are contagious. Just like a smile, right? Yes. Okay, so I think it has stopped raining. Can we step out? Yeah. So it has stopped raining for a little while. I'll just step out and begin my piece, which is totally comedy. All right. And here we go. Yep. हाँ बाबूजी, कहाँ जाएंगे? रामगढ़, फतेहपुर, बेलापुर, कहाँ जाना है? बोलिए. देखो, ये तो अरे गाड़ी देख के गांव में सोचे कि गाड़ी नहीं मिलेगी. अरे क्या बात करते हैं? वो टांगे के जमाने गए बाबूजी. अब यहाँ बसंती की गाड़ी चलती है. देखो, मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं, तो पहले ही बोल देती हूँ. चलना है तो चलो, वरना कह दो नहीं जाना. हाँ, इसमें क्या बात है? कोई बसंती से दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी. ये तो तुम बाहर निकले थे तो हमने सोचा कि पूछ लेते हैं कि गाड़ी में चलना है. कोई जोर जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं. ये भाई बैठे तो बैठे, नहीं बैठे तो नहीं बैठे. ये तो बसंती की गाड़ी है. हाँ, कोई जमींदार की गाड़ी तो है नहीं कि मर्जी नहीं मर्जी करनी ही पड़ेगी. ये तो वही मिसाल हो गई कि क्या बोले, चलना है? हाँ, तो आइए बैठिए. मैंने कब मना किया है? बैठिए. कोई देखो जी, हमें बिल्कुल भी फिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं. तो हम पहले ही बोल देते हैं, बेलापुर का 500 रुपए और रामगढ़ का 250 रुपए. इसमें झिझक मत करना. हाँ, बसंती ने जो बोल दिया सब बोल दिया. हाँ भाई, समझ गई. यही बोलोगे ना कि बसंती बेलापुर का 500 और रामगढ़ का 250 क्यों? तो पूछो, गाड़ी किस गांव की है? पूछो. गाड़ी कहाँ की है बसंती? रामगढ़ की है. देखो, इसमें देखने वाली बात यह है कि बेलापुर के तो हम लेते हैं सवारी तो 2 चक्कर लगाने पड़ते. पहले बेलापुर और बेलापुर से रामगढ़ गए तो रामगढ़ के हो गए. क्योंकि देखने वाली बात यह है कि गाड़ी भी रामगढ़ की है और हम भी रामगढ़ के हैं. अब ये तो रही हमारी बात. अब तुम बताओ, कहाँ चलोगे? नमस्ते.
That was it. Thank you. Where is Sonu? Basanti. Basanti. तुम्हारा नाम क्या है बसंती? I'm sorry, Bati. बड़ा प्यारा नाम है. Bravo. But thank you so much, Loni ji, for your Thank you. time and dedication. I mean, you driving all the way to New York and you stop on the way on the highway and you gave a performance. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. Thank you. Okay, over to the judges, please. Mishal is back. Mishal, hi. Hello, hi, how are you? Very well. Man, you were fantastic. Add a smile from the word go. Yeah, cool. So let's give some marks, please. The judges, would you like to say something? Who's going first? I'll go last on the marks, please. Let the others go first. Yeah, Shishir sir. Yeah. Hi, Mishal. How are you? Very well, sir. How are you? Good to see you again. See you. Yeah, Loni, it was a lovely attempt. I think you kind of nailed it. I would have loved to see a little more accent in what you spoke and how you spoke it. I'm not saying imitate anyone, but I think you should have brought in a little more accent in this. I think it was a brave attempt. Very well done. Do I have to say the marks, or is it going to be collective? No, you are allowed to mark her, right? She's not. Yeah, I'm allowed to mark her. I have marked No, her, it but won't be collective. You mark her and then we will total her. okay, fine. All right. Yeah, thank you so much, Loni. Thank you. And brave attempt. All the way from Chicago to New York. Stopped somewhere in the hills. And I think, yes, the setting was perfect. Mark her. Marked her. How much? 6. Thank you. Over to you, Sonu. Loni, that was a very, very sweet attempt. I liked your tanga and the fact that you're driving, and stopping on the way and remembering so much of that. Ooh, I prepared it yesterday on the way while we were driving. Whoa. That's wonderful. I'm giving you full marks for remembering so much. And as Basanti, I think Shishir is right. A little bit of maybe a little bit of a character, a little bit of a not emojis, but maybe a little bit of a slang or something. It might have made it a little funny. You could have got away with it because you're in the States and you could have probably taken up a Guju accent or maybe done something different with it. A little bit. Do you agree? I get it. Yeah, no, I got off by the rain because I was not expecting the rain. The rain kind of put me off a little bit. So, it was a lovely attempt and it was so sweet to see you doing that. I love the way when you got out from the car, you started cleaning your car. That was brilliant. I love the way you started it. And I'll give you a 7 for that. Thank you. And thank you for joining us. Over to you, Dinesh. I was speaking with her the other day and we discussed a couple of things, and I was telling her the way you speak, the rustic thing, if you can do it, it'll be a very good challenge for you. But I don't know what are the chances of you being able to carry it on. I was missing that certain rustic feel, because Hema Malini was like totally, and she's got that certain South Indian accent. So that she could carry. So, but that I felt you found it difficult. So because you were trying to get one of the two things right, so there was so many dialogue. Then you had to sound rustic. You took too big a challenge, I thought. So I'll give you a 6. Thank you. The earlier one you did, I thought that was when you gave for semi-finals, that was fantastic. Absolutely. But we can't compare. Anyway, you have to move beyond your, comfort level, which you did with this, which I'm very happy about, that you tried to move out of your comfort level, which was very good. Thank you. Okay. Vishal? Yeah, thank you very much. Ma'am, considering all the conditions around you and your effort and everything,
I would give you an I, ma'am. But the only mark, if I would, for me, you didn't reach the 10 because I thought it got a little slow in between the deliveries. You were trying a lot to remember some few minutes here and there, which would probably take away from that accent or something, because happens with me too. But I would give you a 9. It was quite entertaining for me. Okay, thank you so much. Nandita ji, would you like to say something? Yeah, I mean, yes, the whole effort was wonderful, the way you had carried the whole thing, and it was quite innovative. But then the entire thing, maybe there were too many distractions, physical distractions. So therefore, it was not that engaging. So I would like to give you a 5. No, Nandika, you don't have to mark her. We've got 5 judges because of that. So you have to comment on her, which is you did. Okay, yeah? I did. That's great. Okay. So she got a total of 28. Wow. Thank you. Okay, let me just, in very brief, I would like to say the rules are each performer will be marked on 10 by 4 judges. That is Shishir, Sonu, Mishal, and Dinesh. Okay. So you'll be marked on the total of 40 points. Before marking you, the judges will also share the comments. Okay, on your performance, the judges' decision will be final and binding. No correspondence will be entertained after the contest. Please make sure you don't start writing to them. And the can the judges correspond with each other? Oh yeah, you can. After very the much. show. Very much after the show. Thank you very much for this opportunity. I really appreciate it. I would like to sign off right now because now I have to continue driving. Yes. No need Have to a safe drive. Have a safe drive. Drive safe. Safe drive. Carefully. Thank you, Loni. Don't speed. Thank It's you. raining. Take care. Don't speed like Basanti. No. I'm sorry to interrupt. I'll also have to take your leave. Dinesh ji knows I have to go somewhere. So thank you so much. Thank you so much. Tata. Bye-bye. All the best. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Okay. Last but not the least, Rock with DR, that is Dinesh Raheja, will inform you about where to collect the prizes from. Wow, that sounds exciting. Dinesh, Yes. you owe me one as well, my friend. I owe you a treat. Yeah, okay. So anyway, moving ahead, the third and the fourth performers are Sonal Sagor from Mumbai and Kajal Pawar. Sagore, okay. Kajal is not there, right? Kajal is not around, I believe. Yeah. So Asha will perform, I think, in place of At the end. We'll bring her in the end. All right. Okay. Huh? Okay. So Sonal is coming late. She's got some rehearsals of a play. Okay. Okay. Fair enough. Fair enough. So we go ahead and then, of course, I need to request. Yeah. So before I proceed further, I am presenting you the singer who won the Grab the Mic singing contest organized by Rock and DR YouTube. That is Dinesh Raheja YouTube channel. She's only in her teens, but this young girl has mastered the most difficult murkis. The floor is all yours, my dear Vasudha. And she was the first prize winner of the Grab the Mic. Wow. Vasudha Shastri, can you switch on your camera, please? Yeah, okay. Hi. So I'm going to sing my song, which is sung by KK. So. कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा हर कोशिश में हूँ बार बार कर दरियाओं को पार पार आशा तूफानों को चीर ले मंजिलों को छीन ले आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी आशाएं खिले दिल की उम्मीदें
अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशा है खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को पार पार। आशाएं आशाएं आशाएं, तूफानों को चिर ले, मंजिलों को चिर ले। आशा के खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Thank you. Oh, Wonderful. Wow, that was awesome, wonderful. awesome. Vasudha, how many marks you had got last time in the contest? On 40? I guess it was 37 or 35 something. Okay. Now I want Sonu and Sahil to mark her, though this is not part of the contest, but just to. From my side, 9. Great going. Future is bright. Thank you. Vasudha, future is bright. Absolutely. Sonu, what about you? Amazing, Dinesh. I actually am in complete awe of these little children and the way they sing. Absolutely. When did you start learning how to sing, Vasudha? At the age of 11, classical singing at the age of 11. Wow. That's beautiful. And who was your guru? There was a teacher in my school. Now she is retired from there. She used to teach me. How wonderful. You're very blessed and you're very lucky. Thank you so much, ma'am. I really wish you all the best, Vasudha. I hope that this talent of yours can be seen by more and more people. Heard more than seen. Yeah, heard. Thanks for correcting me, Dinesh. And maybe, if you can, I hope somebody can sponsor her and maybe she can have an album of her own or something like that. Yeah. Wouldn't that be wonderful, Dinesh? Absolutely. I keep telling her you got a wonderful voice. Yeah, करने से खुशबू बंद नहीं होती. आपको काम actually, yes. Yeah, she's very good. The right person to mentor who can just sort of give her a little bit of backup and help her to make inroads and getting more visibility. So yes, absolutely. I pray for that, Vasudha. Thank you so much for the lovely performance. I would give you a 9 out of 10. Thank you so much. All set? Can I ask a question? My friend? Vishal? I'd like to ask her a question, please. Yeah, please. Yeah, sure, go ahead. What's the name again? Sorry, Vasudha, right? Vasudha. I'm so sorry, I got it in the middle. You'll have to repeat that. Vasudha. Vasudha, what made you pick that song? It is inspirational. That's why I picked it. I listen to that every when I start my run. I listen to that song first when I start my run every day. I go for a walk, my run, whatever I choose that day. But that's the first song I listen to. And that just brings you out of the dudgery, it just brings you into this active, very energetic zone. It is very inspirational. It's one of my favorite songs. Excellent, damn good choice. And fantastic voice. Thank you. So I will not request Mishal to sing, but he has sung 2 songs.
one international song and one Hindi song. But right What now, is international song? English song. don't talk about it. So Okay. I learned from Dinesh Chacha's guru only. I started learning from him only around 4 to 5 years ago. But I learned, I do it for my shop, for my hobby. I didn't want to be a professional singer, but you have great scope. Your endings get a little loose, but with practice and with some awareness, you'll get that into control. Very good, Vasudha. Very good. Thank you. Good going. So, Dinesh, how about the score, my friend? Oh, yeah. Total score? No, she's not getting a score. She's not getting a score? No, that was just, I wanted to know what. You just wanted her to be part of it. Okay. Yeah. See, I misplaced the score. I'll find it. Anybody else got a good memory and tell me what are the scores? Shishir, you're mute. I found them. Yeah. We have got two contestants so far, na? Two contestants so far. Three. Kajal is not around. No. Who are the sorry, three? two. Sorry, two. Ranita and Loni. Loni. Yeah. Okay, I got the score. Okay. Yeah, we can go ahead. Yeah. Okay. The next, the two names which I'm going to announce as finalists are Zayed Ali from Jhansi. Zayed Mia, Aadab Arz hai. Yeah. Sir, can you hear me? Can you hear me, sir? Yes. Yeah, very much. अच्छा Zayed, I am intrigued basically. मैं थोड़ा सा एक शशोपंज में हूँ कि आप डबल Z क्यों लगाते हैं? Zayed Ali Noor. सर इंजीनियरिंग कंप्लीट एंड यूपीएससी की तैयारी के बाद when I came to theater, this field, theater and acting, तो तब मैंने अपना नाम चेंज किया था, not based on any astrology or numerology, just like that. There's a band, famous band, Noori band. इसका गाना पार्ट चला दे, फोक स्टूडियो का जो गाना है. So there are two brothers, Ali Hamza and Ali Noor. तो जो Ali Noor सिंगर है, वो मुझे मेरे one of the favorites हैं. उनका नाम मुझे उस टाइम में बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने जैद के साथ अली नूर लगा लिया. अब वो चलता आ रहा है तब से, सब प्लेटफॉर्म से वही है. मेरे ऑडिशंस मेरे नंबर्स पे तो वही हो गया. बहुत अच्छा. I mean, I'm really impressed. You are an engineer by profession. I mean, you studied engineering and you appeared for UPSC, and now you're pursuing this career of yours and your passion, I would also say. तो आप क्या perform करना चाहेंगे? Sir, most of my monologues and whatever I perform every time, मैं खुद लिखता हूँ, मैं पोएट्री लिखता हूँ, तो ये भी मेरा लिखा हुआ है. तो आई ट्राई कि जो भी मेरे छोटे मोटे जहन से जो कुछ निकल के आता है आप लोगों को पसंद है. So and don't mind sir, I don't have space where I'm living in Bombay, so I came to a park, public place. तो आपको मेरी आवाज साफ आ रही है ना? I found a spot. बहुत mind blowing, please. Okay, I'll just start, sir, in a second. I just hold my phone, sir. I don't have a stand, so I just hold and perform. जी. Okay. रेहान जोया की कहानी मेरी जुबानी. अच्छा, जोया जो है वो इतनी खूबसूरत है कि जब मैं उनके सामने बैठता हूँ, के साथ होता हूँ, तो सामने वालों को ऐसा नजर आता है जैसे रात और अंधेरा साथ बैठे. वो लिखती हैं, उनकी जहनियत बहुत अच्छी है. अच्छा एक मिनट दिनेश सर, साहिल सर, मैंने आपको जोया के बारे में नहीं बताया क्या? तो मैं बताता हूँ. ये भी कहानी है. एक किस्सा सुनाता हूँ मैं अपना. वो चुपके से इतराती हुई जा रही थी और मैं उन्हें देखकर बस मुस्कुराया जा रहा था. पर उन्हें क्या खबर थी इस बात की कि उनकी ये सादगी से मेरा मन घबरा उठा. या तो मैं अपने मन को संभालूं या उनकी ये सादगी की अदा को. हाथ में मेरे बस एक मामूली सी घड़ी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी
मुझ तक पहुंची, जो मैं उनको देना चाहता था ताकि उन्हें मेरे होने का एहसास हो, पर वो ज़ोया के सामने बहुत कम था। पर फिर मुझे एक बात याद आई ज़ोया की, जो हमेशा कहा करती थी कि अगर तुम कम खूबसूरत हो ना तो अच्छा है, अगर तुम कम कमाते हो ना तो अच्छा है, जिस भी तरीके से तुम कम हो अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि जहाँ ज्यादा होता है ना वहीं शैतान का बसेरा होता है। तो खैर मुझे उनकी वो बात याद आई और मैं हिम्मत कर उनके पास गया और वो जा रही थी। मैं उनसे बोला, ज़ोया, हाँ ज़ोया, ज़ोया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ जरूरी बात करनी है। ज़ोया, मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां देखी। ज़ोया, हो सकता है कि वो तुमसे ज्यादा ज़हीन हो सकता है कि वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत हो, पर ज़ोया तुम में एक बात है जो मेरी धड़कनों को ठहरने नहीं देती। मेरे मन को हर वक्त, हर लम्हा इस बात का एहसास दिलाती रहती है कि तुम्हारे बिना ये जिंदगी तो होगी, बेशक होगी, पर ज़ोया जीने का एहसास नहीं होगा। चेहरे पे मुस्कुराहट भी होगी, पर ज़ोया इस दिल में खुश होने का नूर नहीं होगा। आज ज़ोया तुम बस ठहर जाओ, बस ठहर जाओ। तो ज़ोया जो है वो मेरी बात सुनी, थोड़ा मुस्कुराई और मुझसे बोली कि रेहान वो सब ठीक है, पर यार तुम ना बहुत चंचल हो, तुम्हारे अंदर ठहराव नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, तो ये नदियों में ठहराव नहीं होता, नदी का पानी पिघली हुई पाक साफ बर्फ से आता है। देखो जो है नदियां कभी भी समुद्र में तब्दील हो सकती है उनमें मिलकर, लेकिन समुद्र वापस नदी नहीं बन सकता। तो आज नदी को बहने देते हैं, हम समंदर से कल राब्ता कर लेंगे। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और वो मुस्कुराने लगी। पर जनाब शिशिर सर, इस बार उनके हाथ में मेरी घड़ी थी। बस एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बार जब वो उसी सादगी के साथ पलटकर चली और उन्होंने मुझे पलटकर देखा, तो मुझे इतना समझ नहीं आया कि इस बार मैं उन्हें देखूं या उनका मुझे यूं देखना देखूं। वाह, बहुत अच्छी। रेहान, थैंक यू सर। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। बहुत जज्बात के साथ था और मेरे ख्याल से बड़े अंदरूनी जज्बात आपके बाहर आ रहे थे, राइट? Probably this is your own personal feelings which I felt, you know, which connected well with the audience. या सर वो क्योंकि पाक की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन था। नहीं था, कुछ भी नहीं थी डिस्ट्रैक्शन। That's okay, that's okay, part of it. कहीं पार्क में ज़ोया तो नहीं शिशिर, हाँ जी, कहीं पार्क में आपको ज़ोया तो नहीं दिखाई दी? नहीं सर, मेरे सर एक ही ज़ोया है, वही ज़ोया दिखती तो ये मोनोलॉग छोड़ के चले जाते हैं। बहुत खूब। ज़ोया को बाद में लिंक शेयर करूंगा मैं। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, लिंक शेयर करेंगे। तो मतलब ज़ोया है अभी आपकी लाइफ में? एक ही ज़ोया वही रहेंगे इंशाल्लाह। एक ही नहीं है, ज्यादा ज़ोया है इंशाल्लाह, माशाल्लाह, एक्चुअली गुड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा जैद, एक एक्टर होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, कोई नुक्स नहीं है, लेकिन अगर आप अपने जो आखिरी के शब्द हैं वो अगर आप साफ बोलें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो आप आखिरी के शब्द थोड़े से खा जाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वी अंडरस्टैंड व्हाट द लाइन इज, बट द ऑडियंस आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट वर्ड इज और वर्ड्स आर। सो अगर उस पे अगर आप ध्यान दें तो बेहतर होगा आपके लिए एक एक्टर होने के नाते, क्योंकि आप खुद लिखते हैं और खुद बयां करते हैं। बहुत बढ़िया लिखते हो जैद, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। तो प्लीज इस पे जरा ध्यान दीजिएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी तरफ थैंक यू सर फॉर दैट। मेरी तरफ से साथ। जी शुक्रिया सर। हाँ जी विशाल। I completely agree with Shishir sir. I mean, उनसे ज्यादा स्कूल ऑफ एक्टिंग तो है नहीं, तो I think he's correct. But good effort, brother. यहाँ ऐसे देख के अंदर बोलना बहुत मुश्किल होता है, मुझे तो बहुत मुश्किल होती है ऐसे कैमरा के लेंस में देख के या फोन में देख के परफॉर्म करना। सुपर्ब यार, गुड जॉब, कीप इट अप।
Marks, God bless you. Marks. 7 on 10. Thank you, sir. Sonu, over to you. Of course, I agree with Shishir ji. I just have one more thing that I would like to add. थोड़ा सा जब आप डायलॉग बोल रहे हैं तो अगर वो डायलॉग सीरियस है तो उसमें थोड़ा सा अगर आप ठहराव लाएंगे तो आई थिंक आपकी उन वर्ड्स का उन शब्दों को यू विल do justice to them. You know, I felt that throughout your performance, आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट थी, which is a very nice thing. It's a beautiful, it's lovely that you have a very charming personality. आपकी बहुत वो खासियत है. But I feel that थोड़ा सा words में अगर जरा सा seriousness है तो थोड़ा सा ठहराव और seriousness भी अगर आ जाती तो I would have liked it a little. But on the Thank you, whole, ma'am, for that. Thank you, ma'am. And वाकई में मुझे कोई जोया है ना. जोया एक है, वही रहेंगे हमेशा. अरे वाह, आजकल कौन ऐसे बोलता है? कितने साल हुए ब्रदर? कुछ थोड़ा वक्त हुआ है, but I am damn sure. And is this true anywhere कि ये जो आपने जो भी लिखा है? सर, ये जो कहानी है ये मैंने अपने ऊपर नहीं लिखी. मेरे एक सीनियर है, वो IAS है, तो उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनको प्रपोज उनको करना था. मैंने ये कहानी उनके लिए लिखी थी. So you used to write that. That's so beautiful. That such lovely words came out of you. वहीं से वो मोटिवेशन से निकल कर आया. wherever it comes from, जहाँ से भी आवे. आप जिनको जानते हैं उनके बारे में लिखते हैं. मैं आपसे अभी संभल के रहूंगा. सर बिल्कुल. नंदिता कहाँ है? Yeah, Nandita. and हाँ. no, I liked his composition very. I mean, he recited also very nicely. As Shishir said, little bit of clarity is needed in the entire diction, I thought. And if I'm allowed to give marks, I would give him a 7. You are allowed to give him. Thank you. 7. Sonu, But आपको very कितने good, दिए? very touching. How much did you give Sonu? I haven't given it. I would give him a 6. You would give him a 6. 6. Thank you, ma'am. अच्छा, मैं कुछ बोलना चाहूंगा. हाँ, बोलिए. हालांकि मैं इस वक्त जज नहीं हूँ. वो आपने कुछ अल्फाज यूज किए जैसे ज़हीन, वो और ऐसे आपने 3-4 मुझे बहुत अच्छे लगे. आजकल कौन ऐसे बात करता है? बहुत कम. Very nice. I loved. और दूसरी बात आपने जो कहा ना, कम हो तो अच्छा है. तो हरिवंश राय बच्चन थे ना, वो कहते थे अपनी मन की हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा. बिल्कुल. क्योंकि हम इतना जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है. हम इतने ही दायरे में देखते हैं अपने आप को. आगे क्या प्लान बनी हमारे लिए, बड़ी प्लान, वो नहीं जानते. There is limitation to human thinking, sir. Yes, absolutely. Yeah. आपके राइटिंग में बहुत मजा आया. आपकी राइटिंग. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर. और आई रियली लव द फीडबैक जो मुझे सीनियर से मिला. एंड मैं उसको कोशिश करूंगा कि अपनी एक्टिंग में इख्तियार करूं, और नेक्स्ट टाइम जब लाइव परफॉर्म करूं कुछ भी, तो उस ठहराव के साथ और कुछ चीजों का ध्यान रखूं मैं. क्योंकि कहानी इतनी खूबसूरत है जो सोनू जी ने बात कही. मुझे लगता है कि उसी को लेके अगर आप ये कहानी दोबारा दोहराएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ठहराव क्या चीज होती है और कहानी में कितना ठहराव होना चाहिए. जी सर, बिल्कुल सर. कभी क्या पंचलाइन बोलते हैं ना, तो यू हैव टू वेट फॉर द क्लैप. पंचलाइन में आप ऐसे चलाते जाएंगे तो पंचलाइन खो जाएगी कहीं पे. मुझे सर थोड़ा सा वो, मैं थिएटर से क्योंकि हूँ, तो ऐसे लाइव इंटरेक्ट करके परफॉर्म करने की आदत है. ऐसे फोन पे मतलब वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. लेकिन जो बात सर की है, मुझे पहले भी एक सीनियर ने बोली थी, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल परफॉर्म, तो मैं सारी बातें का चेंज लाकर परफॉर्म करूंगा इंशाल्लाह. Good luck. कुछ कहना चाह रहे थे. Your monologue was so good. You know, it was so engaging that I would have actually given you a 9.5 or something. But it is just you need to practice the diction better. That's all. Thank you, ma'am. Thank you so much. Can I add something? Yes, sir. Yes. You know,
with all the Diggaj judges here. I mean, they're absolutely right, you know. But मैं इस चीज में फिर भी आपको स्कोर करना चाहूंगा ज्यादा, because आपने एफर्ट किया लिखने का. I mean, Dinesh knows about it. I started writing poetry in 2011. I never knew I could write. But achanak, I felt, you know, it was just an extension of mine. I was on the sets, and एक thought मेरे दिमाग में आया और उसको मैंने लिखना शुरू कर दिया, जो जहन में था मेरे. Basically, it was, you know, जब नया नया प्यार होता है आदमी का, इंसान का, तो अक्सर आदमी possessive हो जाता है, you know. So it was about my first girlfriend, and I was so possessive. I was misbehaved rather, I would say, and which I really repent later, and I learned from it. तो मैंने उसके लिए लिखा था कि एक ख्वाब, सॉरी, एक लम्हा और एक समय में एक जो रिश्ता होता है, टाइम इज मैग्नानिमस, whereas लम्हा जो होता है एक मोमेंट होता है. तो उसके लिए मैंने लिखा था कि सिमटा सिमटा सा एक लम्हा कहने लगा मुझे जीने दो. जरा धीरे से लास्ट में, सिमटा सिमटा सा एक लम्हा, सिमटा सिमटा सा एक लम्हा कहने लगा मुझे जीने दो, बंधे बंधे क्यों अरमा मेरे, मुझको भी आसमां छूने दो. पलट के वक्त ने आवाज दी कैसे जाने दूं उस रिश्ते को, पलट के वक्त ने आवाज दी कैसे जाने दूं उस रिश्ते को, जो तुम्हारे साथ संजोए और पिरोए एक लड़ी की तरह. दिया दिल जहां दी तब जाकर ये बना एक रिश्ता, खूबसूरत रिश्ता, और तुम कहते हो कि जीने दो, आसमां छूने दो. कभी ना सोचा कभी ना समझा, कभी ना सोचा कभी ना समझा कि क्या बीतेगी मुझ पर जब तुम जाओगे लौट कर, अपना एक नया आशिया बनाने किसी और लम्हे का हाथ थाम कर. खैर जाओ अगर इतनी तलब है, खैर जाओ अगर इतनी तलब है, लेकिन ये मुझे पूरा यकीन है कि आओगे तुम यहीं लौट कर. सिमटा सिमटा सा एक लम्हा कहने लगा मुझे जीने दो. बहुत अच्छा. So I feel, you know, it is so important to write, and you being a creative mind. I mean, Zaid, आपकी क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं. आप इंजीनियर हैं, आपने ये यूपीएससी का इम्तिहान दिया है, आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, और ऊपर से आप एक आर्टिस्ट हैं, you know, तो ये बहुत जरूरी होता है. हम कभी कभी सोच के बैठ जाते हैं, खासकर हम एक्टर लोग, कि यार यही मेरा दायरा है. नहीं, ऐसा नहीं है. We have to break our limitations. We have to, and let me also tell you, because I have been voice acting for a lot of Hollywood actors. तो बहुत अच्छा लगता है जब आपको Paramount Pictures से मेल आता है, Sahil Chadda, you did fantastic for Zach's performance in Puss in Boots. तो मेरी पीठ थपथपाता हूँ मैं अपनी खुद ही, because हम कभी कभी ये सोच के रह जाते हैं कि यार मैं तो हीरो हूँ बॉस, मैं कैसे कोई कैरेक्टर कर सकता हूँ. ऐसा नहीं है. We are actors, so we have to break all the inhibitions we have. So congratulations and God bless. और बाकी सोनू ने कहा, शिशिर जी ने कहा, विशाल, and even नंदिता जी ने कहा, I think it's fantastic what their comments were. थोड़ी clarity चाहिए और कुछ नहीं. थॉट में है, जबान में चाहिए. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर. एंड तो थोड़ा सा बस मैं लास्ट ऐड करना चाहूंगा कि आपके जो बागबान के दूसरे नालायक बेटे थे नासिर खान सर, जो सिंगल थे उसमें, तो मैंने उनके साथ भी काम किया है मूवी में. एंड अभी रिसेंटली जैसे आपने बोला कि एक्टिंग के बिसाइड भी तुम क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो आई जस्ट कंप्लीटेड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट इन डायरेक्शन. असिस्टेंट डायरेक्टर था मैं. एंड अनीस बाजमी सर के एसोसिएट थे शरद खान सर उनके साथ. एंड अनु कपूर सर एंड राजपाल यादव सर को मैंने उसमें जो बुंदेलखंडी लैंग्वेज होती है, एंड भोपाली, उसका डिक्शन मतलब मेरे जिम्मे था. तो आप साहिल को खतरा बन गए. नहीं, मुझे कोई खतरा नहीं. I always feel, you know, there is space for all. You have to be open. That is so beautiful in this industry. हम सीखते हैं. Yeah. So shall we move ahead, please? हाँ जी. दिनेश, आगे बढ़े. हाँ बढ़िए ना. Yeah. Okay. The next one is Banu Patel from Mumbai. Banu, where are you? Banu ji, her camera is off, her mic is off. Oh, she's there. Yes, sir. Yes, sir. I'm here. I'm very much here. Wow.
Yes, And sir. Banuji. जी. मुझे एक बात बताइए बानू, आप इतनी आसानी से कैसे रो लेते हैं कैमरा के सामने? पता नहीं सर, और वो एक भी आर्टिस्ट का वही काम है. 2 मिनट के अंदर आप कितना रो दिए वो, और मुझे भी रुला दिया वो ट्रैफिकिंग के बारे में बात करते, चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात. Thank you, sir. I'm sorry, DC says you have disabled my camera. Host has disabled camera. Sorry to interrupt. So, my camera is disabled or yours? Mine. Okay, done. Thank you. I think you just did it. हाँ जी बानुजी, जी सर. क्या परफॉर्म कर रही हैं आप? सर हम सिटी ऑफ ड्रीम से एक सीन कर रहे हैं. जी. I saw that City of Dream episodes and I was really inspired by that, and therefore I have selected that. Okay. So, shall I begin? Yes. So, am I visible? Yes. Loud and clear. Okay, sir. Thank you. नमस्कार, मी पूर्णिमा गायकवाड, साहेबांची मुलगी. आप लोग मुझे नहीं जानते शायद, लेकिन मैं आप सबको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ. पिछले 30 साल से बाबा हमारे घर में सिर्फ आप लोगों के बारे में बातें करते आए हैं. मेरे बाबा और आपके गायकवाड़ साहब ने सिर्फ जिंदगी में आपकी लड़ाई लड़ी है. 40 साल पहले सातारा से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव से साहेब ने अपने सफर की शुरुआत की थी. 16 साल की छोटी उम्र में उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया. मुंबई की तरफ जाने वाले बस में चढ़ गए. टिकट के भी पैसे नहीं थे उनके पास. कुछ लोगों ने उनकी मदद की, तब जाकर ऐसे तैसे वो मुंबई पहुंच गए. कई साल कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें इलेक्शन लड़ने का टिकट मिला, और हारना तो हमारे साहेब ने कभी सीखा ही नहीं था, इसलिए वो जीतते गए. एक बार नहीं, बार बार, हर बार जीतते गए. उन्हें कई बार इस राज्य में मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर मिला. उन्होंने कभी भी इस पद का स्वीकार नहीं किया, क्योंकि साहेब का लक्ष्य कहीं और था, कहीं और है. बाबा मुझसे हमेशा कहते थे, पूर्णी, मैं महाराष्ट्र की लड़ाई जिंदगी भर लड़ूंगा, लेकिन महाराष्ट्र का भला तब होगा जब दिल्ली में बैठे नेता उस पर ध्यान देंगे. इसलिए मैं दिल्ली जाना चाहता हूं. अमय राव गायकवाड़ कहते थे, दिल्ली दूर है, असंभव नहीं. क्या कहते थे हमारे साहेब? दिल्ली दूर है, असंभव नहीं. दिल्ली दूर है, असंभव नहीं. कुछ याद आ रहा है आपको? जिस वक्त बाबा पर गोली चली थी, तब भी उन्होंने यही उपकरण डाला था. इस पर खून के धब्बे आज भी है. मैंने जानबूझकर किसी को ये धब्बे धोने नहीं दिए, ताकि मुझे नहीं, आपको नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जनता को ये हमेशा याद रहे कि अमय राव गायकवाड़ का खून बहा है. साहेब का वही खून उनकी बेटी में भी है. हम उनका खून व्यर्थ नहीं जाने देंगे. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. Powerful. Thank you. Yeah. Over to you, Shishir.
Manu, I did not really, if I was there in the audience, I don't think I would have paid much attention to the way you delivered your monologue. I'm sorry to say, but there was no fire in the way you spoke. And I was missing that, that gut feeling from inside that, yes, we are here to rule. So I think there is a certain amount of the accent also. Are you a Maharashtrian by any chance? No, sir. You're a Gujarati? I'm a Bori Muslim. Oh, I see. Okay. So yeah, the last words like "hai" or "ha," those were the kind of words that stick out when you're listening to a monologue carefully. And when you say "hai," it just throws you away completely. So I think those last words, the pronunciation, certain words have to be absolutely on the ball. But yeah, I think it's a brave attempt. I mean, after Priya Bapat to come up with this, I think it's a brave attempt. I'll give you 5. Thank you, sir. I'll keep in mind all your suggestions and work on it. Sonu. Oh, Banu, Hello, ma'am. I am very happy, appreciate the fact that आपने इतने डायलॉग अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है डिलीवर करने की, लेकिन I have to with Suji completely कि मुझे वो फील नहीं आई, मुझे ऐसे लगा कि कोई आप में लीडरशिप क्वालिटी है कि मैं अगर ऑडियंस में हूँ तो मैं आपको दूंगी और आप पे विश्वास करूंगी. I feel maybe या तो आप कोई maybe some other monologue which should have been a little your persona or your personality. Maybe that would have been a little more effective because I know you're a very good actor. Dinesh has said that you can cry at without at the drop of a hat. So yes, I think maybe a choice of another monologue you would have done a lot more justice to that. I feel इस particular में आप उस character के अंदर नहीं जा पाई, आप वो leadership जो quality होती है ना, दम जो होता है, वो दम missing था. But it was a very nice effort. And I think next time आप जब भी perform कीजिए, आप ये ध्यान रखिए क्या जचता. सोनू इन्होंने किया था इनके फेसबुक पे, इन्होंने कहा था कि बीज डालेंगे फिर आम का पेड़ निकलेगा, उससे अच्छा फ्रूटी क्यों नहीं खरीद ले. I thought so she had done that very well, but I was telling her वो करो, she said नहीं मैं कुछ और कर दूँ. वो बहुत अच्छी था. This has to find her groove. What is it that works for her? But yes, I still think it's a very brave effort. So I would give her a 6. Thank you, ma'am. Vishal. No, after Sahil, sir. Huh? After Sahil, sir, I'll go. Dude, I'm telling you. Nandita. Okay. Nandita ji. Okay. I mean, I think Shishir ji and Sonu ji have kind of, said what I would have also agreed with them. I'd give her a 5. Okay. Vishal, over to you. Okay, so thank you. Yeah, I think what Sonu ma'am said, if you've taken another monologue, probably the comedy one, maybe it you could have done well. Yeah, that's too, that was not, that monologue was too small and not entertaining. So, if you would get something more entertaining, you could probably get attention in such a short span. Yeah, that's about it. 5 on 10. Cool. I just want to say something. Dinesh, yeah. This Priya Bapat, I was so amazed by her acting. She's an amazing actress. I want to meet her, बहुत phone ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा. और शिशिर को भी परेशान नहीं करना था. मेरे पास है. हाँ, अच्छा. बहुत ही fantastic actress है. बहुत कमांड है उसको अपने कैरेक्टर के ऊपर, बहुत ही ज्यादा. I did a Marathi show with her. जी? I did a Marathi show with her which went on for about
900 episodes. Wow. Must be knowing her really well. Yeah, I know very well. मैं आपके साथ चलता हूँ next time उसको मिलने. We'll have to talk about this, Dinesh, next time. Yeah. और आपने बोला इनके एक्सेंट में गड़बड़ था, मेरे को है का नहीं पता, लेकिन इन्होंने एक वर्ड तो बिल्कुल नेल कर दिया महाराष्ट्रन स्टाइल में. हम बोलते हैं अवसर, इसने बोला अवसर, ऐसा अवसर आएगा, whatever. So that she did it very well. Did you do that deliberately or that was your Hindi also that way? No, deliberately. Oh, Even अच्छा me. क्यों? Avsar. Yes. Yeah, so your total is 21. Okay, sir. Thank you. Okay, बातों में बात चली है, तो I would request Shishir. You know, I remember the last time we talked over the phone, he was talking about we wanted to check from Sonu something, you know, about her, how she got. Before I speak to Sonu, I just like to mention one thing here. Whether the monologue is 10 lines or 25 lines, I think the essence to get through to your monologue is to get the rapt attention of the audience. That is extremely important. It can be 5 lines also, but the moment you start speaking, that is the moment you need to grab the audience complete attention. Yeah. So yes, so here is the question, Sonu. Tell me, I know, I mean, it's a very, very long time back. You did this film called Khoon Bhari Maaf. How did you manage to land up with a role like that? I think, Shishirji, it was a great deal of luck. Okay, but it wasn't easy because Guruji was actually approaching a lot of actresses within the industry, which I came to know later. And most of them turned that role down because nobody wanted to play a second fiddle to Rekha Ji since she had the title role, you know. And I think when I met him and when he narrated the film to me, I could see myself as a character. So I just knew that that was me. And I was very sure of it. Okay. But I went back home after the meeting and I didn't hear from him for almost a month. And I was wondering, I said, क्या हो गया? ये तो रोल मेरा है. अभी नहीं आया. So then he called up and he said that, listen, I just need to know if you can, you know. And fortunately for me, I had done a film version which was directed by Tanveer Ahmed. So वो film complete हो चुकी थी और मैं उसकी dubbing कर ही रही थी. So Guruji came to the dubbing studio and he watched me dub, and I was, you know, when you're that young and you're that precautious, उस समय one take okay. I was like very cool and chilled. So he was relieved. He said, चलो इसको dialogue delivery तो आती है. Because उस समय acting models की थोड़ी इतनी अच्छी reputation नहीं थी. हम acting डायलॉग डिलीवरी का ओके हो गया. उसके बाद फिर 1 महीना गुजर गया, फिर मुझे उनका कॉल नहीं आया. फिर 1 महीने बाद दोबारा फिर से फोन आया कि लिसन देयर इज अ डांस सीक्वेंस इन द फिल्म और आपको डांस आता है. I had done this film called Mahadev with Raj Sippy as the director. And वहाँ मैंने इलियराजा की म्यूजिक पे 2 डांस परफॉर्मेंस किए थे. तो I said, हाँ गुरुजी, I can show you. तो मुझे याद है देव साहब की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में I had, and he had seen one of the songs where I was dancing. जब उन्होंने मुझे डांस करते देखा, उसके बाद उन्होंने मुझे 1 हफ्ते बाद फोन करके ऑफिस में बुलाया और कहा कि भाई ऐसा है, now you are my Nandini and now let's take it forward. So it was a long wait, but it was something that I knew instinctively in my gut that
when he narrated it to me, I said, "ये तो मेरा role है, ये किसी और का नहीं है." So tell That me, conviction is very good. That हाँ जी, conviction. वो conviction बहुत अच्छा है कि ये जी, चीज मेरी है, मेरे पास आएगी. so हाँ, tell me, Sonuji, being an actor, of course, you're also one. Do you, at any given point of time, and especially being that film that you were doing, Kunbari Mang, did you have those nervous energies within you? वो चूहे दौड़ते समय वो क्या होता है, कैसे होगा, क्या होगा? On set, Rekha ji is there. Everybody is going to be looking at you and performing and so on and so forth. Did you have any kind of inhibitions then, or did you want to shed it all there, or did you want to just, release it slowly as time went by? Fortunately, Shishir ji, I had none of that. And the only reason was because जब मैं सेट पे जाती थी, मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचती थी कि मैं नंदिनी हूँ और मुझे क्या करना है. तो मेरे आगे पीछे लेफ्ट राइट कौन क्या कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं. इनफैक्ट आई थिंक दैट एक बार हम लोग आउटडोर में हम लोग और मैं न्यू भी बहुत थी इंडस्ट्री में, तो we were having lunch. I remember everybody together. We used to all have lunch together. And Mr. Baby took Rekha ji. This was to be a hit. Now it sounds foolish, but let me tell you truthfully, I said, what is a hit? फिल्मों का तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि हिट फ्लॉप क्या होती है और बॉक्स ऑफिस क्या होती है, मार्केट क्या होती है, सेलेबिलिटी क्या होती है, इन सब चीजों का ज्ञान नहीं था. So I was very fresh and very raw. So I think that, that sort of carried me throughout the film. What was your feeling when your name was announced for the award that you received for this film? Oh, I think I carried the same confidence onto the stage, Shishir ji. Wow. And I remember I did say that this is not my, this may be my first, but this is not my last. So. Wow. Absolutely. Wonderful, wonderful. Yeah. One last question before we move on. Sahil, I'm so sorry. Dinesh, I'm so sorry. I have to ask because she speaks so well and I cannot take my eyes off Sonu Walia at the moment. Tell me, of course, I don't know whether you've seen the first season of the Monologues by an Actor contest that was done by Dinesh. But in case, if these kind of contests were done during your period, during your time, do you think it would have helped actors in any way? Oh yes, Shishir ji, because पहली बात तो ये कि as an actor आपको थोड़ा confidence मिल जाता है when you perform, when you perform in front of the camera, आपका खुद का experience, आपका खुद का confidence बढ़ता है और आपका exposure होता है. You have to be seen, लोगों को आपकी कला के बारे में कैसे आप you have to reach out. So मेरा ही example देख लीजिए. Fortunately I had a backlog of 2 films जो मैंने already कर चुकी थी. जो Kunbari Mang was my first release. That is my good luck. That is known as the first release. But मुझे एक body of work दिखाकर ही काम मिला. So this adds up to your body of work. Correct. Every audition that you gave, every performance that you have, you can compile it and collect it and make a resume of sorts of yours, and then it's easier to connect with. Today it's very professional. You have so many agencies, casting agencies. Correct. So yes, it does. It would have made a very big difference then. I mean, how many people get to showcase 2 films, feature films, as an audition? Right. So this is very important in today's times. I feel that you need. Since I'm a journalist, I can't resist asking at least one question. I had gone on the sets of Ladai, Deepak Shivdasani's. There was Dimple Kapadia, Rekha, Archana Puran Singh. After every shot, they were going and sitting in different corners, not even looking at each other. Then when the shot came, so I wanted to know, did you face something similar during Kunbari Mang? Considering you were new and Rekha was already a huge star. It always helps if they come and encourage a newcomer instead of like you find your way. Did you find your way or were you encouraged?
मुझे तो डांट पड़ी थी सेट पे. अच्छा. This is a very funny incident, Dinesh. Well, not so funny, but the truth is, जब मैं खून भरी मां की shooting कर रही थी, and I must tell you this, I was in complete awe of this legend. His name is Mr. Manoj Kumar. Okay, Manoj. I grew up watching his film. So there was this film that he had signed me for. That was a film called Clerk, and Clerk. all I wanted to do was stand there and watch him, observe him, and just see how he makes these movies. So of course I had a very small role in that. So उन दिनों I was shooting day में खून भरी मां के लिए और रात में Clerk के लिए. So when the dance competition was supposed to be picturized, उसके पहले we were कमल मास्टर जी ने rehearsals के लिए hall book किया था and I never landed up. तो जब मैं set पे गई पहले दिन dance competition के, तो रेखा जी ने मुझे पास में बैठाया and she just scolded me and she said, "You never went for any rehearsals?" I said, "I'm sorry, but I was shooting in the night, so I couldn't go." So it was, but she did it like a very, very gracious, elder, and a very बहुत प्यार से, बहुत with a lot of care. So in fact, Dinesh, I want to say this, that जहाँ भी मैंने काम किया है, I have seen that everybody was extremely warm and very, very natural and normal, and उस समय family वाला feeling तब तक था. So I have very fond memories of the work that I have done in those films. And no, we were not going and sitting in the corner. If we were going and sitting in the corner, it was only maybe because we wanted to learn our dialogues, or we wanted to, sort of be fresh for the next shot or something. I think that was the only reason. But no, there was no animosity. There was no bitching. There was no criticism. There was a work for everybody, and everybody had their own space. And it was a very, very congenial, very, very happy. Very good. Wonderful. That was my experience. And I really respect Rekha ji because she was so together and so conducted, And I do remember climax me when we were shooting the climax, she was those scenes where she performs, with the horse and all that. And I was just standing there. And I remember looking at her and like, wow, that's professional. 1 minute she'd be there, completely normal, and the next minute she'd be on that horse and she'd be like fire and everything. So yeah, it was actually an awesome, inspiring thing to watch her perform. True. I don't but I enjoyed it tremendously on the shoot. Very well. Great. Lovely. Hey, What an wait, 1 minute, experience. 1 minute. Now, after every 4 participants, I'm going to tell you who's leading. So right now it's happening in a descending order. So Okay. Rita is 36, Loni is 28, Yeah. Zahid is, have I not counted? Zahid is 27 and Banu is 21. Wow. So till now, Renita is leading. Now we got 8 more to go. So if she survives the 8th, then she'll be number 1. There's something which Shishir just mentioned, it is so important. कि आप जो भी dialogue या monologue, you have to really line का हो या 5 line का हो, it has to come from here. Only when it comes from here, your performance comes out. भले ही वो बच्चन साहब ऐसी बच्चन साहब नहीं बने, दीवार का उनका जो monologue था कि आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो इंसान आज तक तुम्हारी सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा, आज खुश तो बहुत होगा तुम. So I really loved that because we grown up on those. I still remember we had the record where the dialogues record, Salim Javed के dialogues होते थे कि डावर साहब मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता. So we've grown up on that. भले वो मुगले आजम के हों. And so it's what Shishir said is so important. एक तो ये सारी खिड़कियां जो बंद है ना, मेरे को पसंद नहीं आ रहा भाई. नंदिता जी आप कहाँ पे हैं? वसुधा
हाँ ये वसुंधरा खिड़कियां शास्त्री, क्यों बंद ऋचा है? मित्तल, मतलब ये क्या है सब? मैं इसलिए Want to see all. I need to see the reactions. Yes. Okay, Asha Gupta. I have heard you. Gupta Mit- I have heard you doing Bachchan Saab. I'm very much here. Just, I've been out the whole day, so I'm hearing everything, just sorting out a little work. That's perfectly all right. No, but I'm telling you what Shishir said was so important that whatever, even if it is a 4-line dialogue, even you said, Nantaji, it has to be said from the heart. You know, it's very important. As actors, we really need to see that passion because चेहरा आपका एक ऐसा होता है, especially in camera, just a twitch of an eye is caught. So it's very, very, very important to feel and say the dialogue. I still remember when I was in the acting school, वहाँ पे एक था, हालांकि वो diction का piece था, लेकिन मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोलना चाहूंगा। हाँ जरूर। कि जबरदस्त दाम मांग रहे हो, जरा जरा सी ज्यादती जबरदस्त दंगा खड़ा कर देती है, जोर जोर से जोर आजमाओ जरा तो जरा सी ज्यादती जमानत के सामने आपको जलील कर देगी। जर्रा जर्रा आवाज लगाता है जिंदगी की। जिंदगी एक आईना है, जरा सा इंतजार कीजिए, जमाने भर की खुशियां आपको इसमें नजर आएंगी। जुल्म की आवाज से नहीं, साज की आवाज से जिंदगी की जंजीरें नजरअंदाज होती हैं। So I really felt, you know, it was so important that each and every word of your dialogue, you know, you have to recite it or you have to say it like that, what Shishir said, and jo Nandita ji aapne kaha, you have to feel and say that. So let's move ahead. It's a great monologue show. So next contestants, I mean, the finalists are Dhanashri Pandav from Oslo. Before that, Sahil Sonal is here. Okay. We can invite her into the room at least. Yeah, hi Sonal. How are you doing? Hi, sir. How are you? Sonal, yeah, we missed you. Yeah. I know you were late. I'm really sorry to join late. I had rehearsal. No problem. Please. So just wait for Dhanashri to finish and then we will call you. Okay, no problem. You can stay tuned in. Sure. Yeah. So can Sonal begin, please? Okay, let's ask Sonal to do. Yeah, Sonal, why don't you start? Yeah. Am I visible? Yeah. Okay. So give me 5 seconds. I'll be in the mood. साहब मेरे पति की मौत 2 साल पहले हुई, मर्डर हुआ था। जिसने मर्डर किया ना साहब, वो ऐसे ही खुलेआम घूम रहा है। हमारी लाइफ कैसा? पुलिस वाले कह रहे थे कि मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे। हमारा ख्याल साहब हमारा पति लेता था अच्छे से। वो ना अपने जॉब से बहुत प्यार करता था, ड्राइविंग करता था और ऐसे लोग ऐसे दिख जाएंगे ना, 10 रुपए भी पॉकेट में होंगे ना साहब, 10 रुपए भी निकाल के दे देगा। ऐसा है नहीं कि 100 रुपए ही देना है, जितने कमाई में 10 रुपए रहो दे देता था वो ऐसे लोगों को। दिल का बहुत अच्छा था मेरा दिनेश। तो अभी मैं अभी उसके जाने के बाद मैं घर घर जाके बर्तन मांजती, काम करती हूँ और अपनी बच्ची को संभालती हूँ। उसको अच्छा नहीं लगता था सब कि मैं ऐसे कोई काम करूँ। तो कुछ मदद मिल नहीं रही ना पुलिस वालों से। वादा किया था हमको, पर मेरी बेटी को खेलना होता है बच्चों के साथ। बॉल मांग रही थी,
नहीं दे पाए। वो घूम रहा है मर्डरर, ऐसे कुत्ते की मौत होनी चाहिए उसकी। अभी मेरी बेटी को मैंने स्कूल में डाला है, पढ़ती है, चल रहा सब, कर रही मैं सब सही से। कुछ हो तो बताना सब मुझे उनके बारे में। बस डन। डन सब। Yes, Shishir. सोनल, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई समझने में कि आप क्या कहना चाह रही हैं, क्योंकि एक तो क्लैरिटी बहुत कम थी और बहुत सॉफ्टली आप बोल रही थी, तो वो समझ में नहीं आई बात। कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जो बिल्कुल समझ में नहीं आए कि अब क्या। जब आप थोड़ा सा जोर से प्रोजेक्ट करती थी तो वो लाइन समझ में आती थी, बट अदरवाइज आई कुड अंडरस्टैंड कि what was the conversation that you were having, and वो बात बिल्कुल रह गई बीच में। लेकिन शिशिर मुझे तो सुनाई दे रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा था दिनेश। हाँ, साफ था। Sonal, mute पे हैं। What is Sonu? I don't know, I could not hear. I had to actually do this anyway. Me too. Yeah, I had to put the phone right to my ears. Besides that, थोड़ी सी और क्लैरिटी अगर हो बोलने में या थॉट्स में, तो बेहतर होगा आपके लिए और सुनने वालों के लिए भी। I'll give you 5. Over to you, Sonu. Yeah, I think her mood was good because even though I could not hear her clearly, but I felt that the little conversations that I got, इतना तो समझ में आ रहा था कि वो दिल से बोल रही है। So I would give her. Nandita ji. Yeah. I also have the same feeling. I mean, there was lack of clarity and the piece was not engaging. So I would give a 4. Vishal. Hi. Thank you. Ma'am, I would give you 5. I thought somewhere in the middle you'll get it, and you did get it somewhere in the middle for a few seconds when you got emotional and all. But I had to pull the phone to my ears to hear you, so I missed out on the expressions majority of the time. So this is why I'm giving 5. Good luck. Dinesh. No, I don't mark her, but I say I like the one transition she did from before crying and after, the between she was not crying and then she started crying. I like the way she did that transition. It was very interesting. Thank you. So what is the total, my friend? 21. Okay. Good luck, Sonal. All the best. बात कहूँ मैं, आपने लास्ट टाइम भी अथॉरिटीज के खिलाफ वो रो रही थी कि मैं इनके बारे में कंप्लेन करूं कि नहीं, रेप के बारे में, और आपके माँ बाप कह रहे थे जी। तो अभी भी आपकी अथॉरिटी से शिकायत थी। Thank you, Babu. Okay, can we move ahead, please? The next finalist is Dhanashri Pandav from Oslo, Norway. Dhanashri, hi. Hello. Hi, good evening. Good evening. How's Norway treating you? Yeah, now it's good summer. Enjoying summer.
Yes. Lovely place. Okay, sir. Anybody? So shall we request her to move ahead? Yes. आप क्या perform कर रही हैं? मैंने एक इशू लिया है, छोटा सा इशू है जी. जो आजकल nowadays we can see in the families and जी. kids are suffering from that, Oh. getting frustrated. Oh. Okay, please carry on. वाह 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 वाह, तो खत्म कर दो ना, just end it. पेरेंट्स बनने का काम खत्म कर दो. बच्चे पालना अगर इतना टफ काम है तो क्यों करते हो? किसने कहा है पेरेंट्स बने रहने के लिए? किसने कहा है? I really don't understand. क्यों करते हो कंटिन्यू दिस? जब बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, तब आप आराम से उनको छोड़ के चले जाते हो. और फिर ऐसे बैठ के कंप्लेंट करते रहते हो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो बनाती है, पागल है, प्राइज नहीं मिलता. हाँ, प्राइज नहीं मिलता, प्राइज नहीं मिलता. जस्ट मिनट. पेरेंट्स बच्चों को पैदा करते हैं ना, है ना, करेक्ट है ना, और फिर उनके साथ जो चाहे वो करते हैं, whatever they want it, और फिर ब्लेम हम पे डालते हैं. टफ है. What do you mean by tough, man? Tough my foot. छोटी सी थी, बहुत छोटी थी, हमेशा छोड़ के जाते थे अकेले मुझे. How could you do this to me? कैसे कर सकते आप दोनों ये मेरे साथ? सेकंड स्टैंडर्ड में फेल हो गई थी. Yes, second standard, the niche भेज दिया मुझे हॉस्टल, कर दिया अपने आप से दूर. और जब मैं ना बहुत खुश थी वहां, तो वापस लेकर आ गए मुझे, अपने दोस्तों से भी दूर कर दिए. बच्चों को खिलौना बना के रखा है, जब भी जीता अपने कन्वीनियंस से अपने पास बुला लिया और दूर कर दिया. यस, पागल बुलाते हो ना मुझे, पागल बोलते हो ना, जाने वाली हूं मैं, दिमाग के डॉक्टर के पास जाने वाली हूं मैं. निशा पागल. मेरे पीठ पीछे बुला सकते हो आप मुझे पागल? बुला सकते हो? Say it. Come on, say it. यही सोचते हो ना आप लोग मेरे बारे में, पागल समझते हो मुझे. बस खत्म कर दो, ये पेरेंट बनना खत्म कर दो प्लीज. थैंक यू. No, I would like to go first on this, क्योंकि आप जो कह रहे थे ना, वो मेरे साथ बहुत रेजोनेट हुआ. ये छोटा इश्यू नहीं है. पेरेंट्स कितनी बार अपने बच्चों को मंकीज बनाते, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ. सर स्पेशली जो बिजनेस फैमिली होती है, दोनों वर्किंग होते हैं और बच्चों को अपने हाल पे छोड़ के चले जाते हैं, तो कभी कभी उनका ब्रेन माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है. अभी हम पूना बहुत देखती हूँ, नॉर्वे में भी बहुत देखती हूँ. रिसेंटली पूना गए थे, तो मेरे ब्रदर इन लॉ को एक डॉग है, तो हम कहीं पे भी जाते थे तो सोचते थे इसका क्या करेंगे,
फिर हम लोग ऐसे रेस्टोरेंट ढूंढते थे जहाँ डॉग्स को अलाउड था, नहीं तो उसको हम लोग 2 घंटे बंद करके चले जा सकते थे ना। लोग बच्चों को छोड़ के जाते हैं, ये तो कुत्ते की बात थी। तो आई गेट वेरी एंग्री जब ऐसे करते हैं। मैंने एक कविता लिखी थी, पूरी नहीं सुनाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ पूरी नहीं सुनाऊंगा। She plays alone with her dolls, surrounded by 4 grim grey walls. तो you know, मैं वैसे बच्चों को जानता हूँ, तो वो क्या करती थी, अभी बच्चों के साथ उसको खेलने को नहीं भेजते थे उसके पेरेंट्स, तो बैल्कनी में खड़ी रह के नीचे बच्चों को खेलते हुए देखती थी। तो दिस सो सैड, दिस सो मच, हम लोग चिल्ड्रन के ऊपर क्रूरटी करते तो हमको एहसास भी नहीं होता है, कौन किसको जाके बोलेंगे, माँ बाप को जाके बोलेंगे, अब हम ही तो इनके साथ ऐसे कर रहे हैं। तो कितनी बार मैं किसी से पूछता हूँ कौन से स्टैंडर्ड में हो, तो उसका फादर बोलेगा 6th स्टैंडर्ड में। मैं बोलता हूँ आपसे पूछा था मैंने, इनसे पूछा था। They just take over a child and then the child's personality gets, sorry मैं बहुत बोल गया, अभी कोई और बोल, पर मैं इनको 8 मार्क दूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। Shishir, unmute please. Shishir won't talk on this, na Shishir? Okay, okay. Vishal. It was entertaining. Who's written this, ma'am? Whose dialogues were these? मैंने इंस्पायर होके लिया है कहीं से, और मैंने खुद अपना लाइंस भी उसमें डाल के अपने स्टाइल से प्रेजेंट किया है। यही मुझे लगा था। तो मतलब आपने बाकायदा लिखा है इसे या आपने अभी इम्प्रॉम्प्टू ले लिया? इम्प्रोवाइज किया है मैंने। ये भी मुझे लगा था। इम्प्रोवाइज किया है। ये भी मुझे लगा था। तो आप मतलब आपके ऐसे काफी एपिसोड्स होते रहते हैं, क्योंकि आप बहुत नेचुरल, बहुत कंफर्टेबल थे। सर मैं तो पहली बार ही कर रही हूँ, मैं एक्टिंग फील्ड से नहीं हूँ, आई एम सिंगर। अच्छा ठीक है। Anyway, so I give you for the entertainment, yeah, I'll give you a 6 on 10. Okay, sir. Nandita ji, kindly unmute yourself. Yeah, okay. So yes, I found it quite entertaining, and I would give her a 7. Over to you, Sonu. I like her conviction. She feels deeply about this issue, and she wants to convey that to me. This is a child's anger, which they cannot talk about. So yes, they can go crazy, because this is like, it's sad, it's a truth of life that yes, in working homes, well, both the parents are away working, the children are alone. I wonder what these children will be like when they grow up. But if if this is the way they're feeling, then I foresee a very, very sad future indeed. But I have really liked her conviction, so I would like to give her an 8. Thank you, ma'am. Can I add something here? Yes, mostly I am from North, born and brought up in Delhi. लेकिन मैंने देखा है अक्सर वहां पे ना बहुत peer pressures बहुत होते हैं पेरेंट्स में, तो उस वजह से कई बार बच्चे भटक जाते हैं, because they don't know what they are supposed to do. कि अचानक डांट पड़ी है गाड़ी के अंदर और एक पार्टी में आए हैं अपने बच्चे को लेके, और वो अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा वो गब्बर सिंह वाला डायलॉग सुनो। बहुत उनको इतना पीयर प्रेशर होता है बच्चों को भी और बच्चों के पेरेंट्स को भी कि दे आउट टू आउट परफॉर्म द अदर पर्सन एंड देयर चिल्ड्रन। सो वेल डन धनश्री, आई थिंक इट वाज अ गुड टॉपिक एज सच, टू पिक अप, एंड वो एक बहुत अच्छी चीज है आपकी जो आपने ऑब्जर्व किया कि ऐसे बच्चों के साथ होता है और आपने उसको परफॉर्म करने की पूरी कोशिश की, and you came out with that angst, which was very important. Thank you. Thank you, sir. Words for Dhanashri. I have known Dhanashri now for quite some time. She is a singer. This is the first time actually I have seen her perform. Wow. So the semi-final as well, and I've seen her today again. I must commend Dhanashri for even sticking her neck out to perform, being a singer. No training of any kind.
unlike all the actors that I have known and some of us here as well. So yeah, very well done. And I completely agree with Sonuji when she says, I love the conviction that she came with. And that is that strong point. Yeah, half your hurdle is won when you have conviction, where you can, if you have the conviction, you can actually take in the audience with you. You need to have that conviction within you. So well done, Dhanushree. Yes. I cannot mark you, of course, but I really, it's a commendable job. Thank you so much. Thank you so much, sir. Okay, Dinesh, over to you. What is the score like for the lady? Total is 29. So she's Wow, second in not the bad. ball now. She's second right now. Very nice, Dhanushree. Okay, now the next finalist is, of course, Nandini sent from Washington, DC. Washington, DC, पिछले 10 दिन में बहुत देखा गया, लोगों ने देखा, and for various reasons, our Prime Minister was there. So, over to you, Nandini ji, from Washington, DC. Thank you. The Indian diaspora, I must say. Fuck! Dang it! Fucking A! I'm sorry. Excuse my language, please. Are you okay? Wait. Alyssa? Alyssa Davis? Alyssa! Oh my God! I can't believe it! Oh my God! Yeah, almost 30 years. Yeah. You haven't changed a bit. I would have known you. I would have known you anywhere I saw you. That quirky smirk around your lips and that faraway look in your eyes. And clearly you're still running into things, not looking where you are going. Look at this. Look at this. Oh, well, thank you. You're so kind, but I did find something that is not quite the same. Look at these grays. Look, your eyesight. Smile is the right, eyesight not so much. Yeah. Marriage, kids, and career. That's a lot to answer, but here goes. Yes, and fairly rewarding. Yeah. How about you? Richard. Richard. Wait a minute. No way. Shelby's brother, our friend Shelby's brother, Richard. Wow. Yeah, we have a lot to catch up on. But hey, listen, I gotta run. Yeah, I was here for a meeting, got a plane to catch. I must go. Sure, yeah, so unfortunate. Yeah, I'll follow you. Facebook, Insta, got it. Oh, what's that? The reunion next year, our 30 years. Yeah, well, I'll see you there. Bye. Reunion. But I'm still stuck on our prom night. Were you in on it? Nobody told you your BFFs, Shelby and Kelly, and they had this whole plan. And really, you didn't know about it? Mrs. Davis, your mom, wasn't she behind this, all of this? You're gonna tell me you didn't know? What was it? What were we? Was I your experiment? Did you experiment with me, or were you just with me to piss your mother? What was it? What were we? Do you know what it was like standing there? You want to know what it was like standing there all alone in that stupid little dress in the middle of the gym? Do you know what
what it felt to know that all my friends, or those I thought were my friends, they had concocted this elaborate plan just to hurt me, to humiliate me. Yeah, and you know the worst part of it, Alyssa? You want to know the worst part of it? You didn't come. You knew what was happening to me and you didn't come. You didn't come. You didn't hold my hand. You didn't take me out of there. You left me there all alone. And all I want to ask you is, why? For 30 years I've waited to ask you. Why? Thank you. Nice. Shishir. Nandini, very, very strong, I must say. Yeah, it started off beautifully, and I think you brought a smile to my face. Thank you. Some strange reason, I don't know why I was smiling, but I was smiling. I don't know whether it was something that spilled on you or whether it was the... Maybe internally you knew. The other day you were saying people should write, and others are saying it today, and I did write. Thank you. I was inspired by something, but I wrote it. Oh, very well done. I think it was very, very articulate. You spoke very beautifully. The words were very, very kind of spoken. It was with great clarity that you did speak, and for which I will give you 8. Thank you. Vishal? Can we let Sonu ma'am go first? Okay. Yeah, okay. I liked the thought, Nandini. You know, it's true. There are so many things that we hold on to for years and years and years. And it affects our very being. You know, just one little thing, it can be so traumatic that you could probably live with the complex for the rest of your life. So yes, I like the subject that you picked up. I like the thought that you brought to all of us here, that some things unanswered can linger on and become deep wounds, which affect our psyche so much that they can actually affect the quality of our life. So I really love what you've written, Nandini, and I think you did justice to it by speaking very well and portraying it very well. So yeah, I would like to give you an 8 for that. Nandini ji. Nandita, sorry, Nandita. No, my turn. Nandini is and Nandita. Okay, let Nandita mark. I'm supposed to mark, but she can mark. Yeah. Okay. You're supposed to mark or I'm supposed to? You can I'm mark. not supposed to, but you mark now. I'll mark. Mark, of course. So I thought, it was quite engaging. It was quite interesting. It was clarity. And just that I found it a bit too long, but I'll give you a 7. Thank you. Thank you. Vishal. Thank you. I'd give you an 8. Initially, I was like, oh God, I'll be listening to a telephone conversation, or is she going to bring up something? And I was very happy when it came up, the second half. And it's still a conversation only, but, like everyone was talking right before your performance, Dil Se Aana Chahiye, I thought it came. It caught everyone's attention. Your facial expressions were pretty out there. Dialogue delivery, the emotions in the voice, pretty out there. Yeah, it was very nice. It was enjoyed it. 8. Thank you. Good luck. Thanks. Well, I would like to add something. It was very natural. It was very natural. It was just like a chat. But yes, of course, the angst is there. It's pent-up feelings which comes out. So it was very nice. Thank you so much. And my scorer has gone somewhere, Mr. Dinesh Raheja. So
Do we go ahead with some of the other people? 31 side. 31. Okay, thank you. Thank you very much. Well, now, of course, we are coming closer to the end part. And I wanted to request Dinesh to narrate one of his poems published in the Sunday Midday, which had, of course, prompted Mr. Raju Hirani to call him for Sunday morning breakfast. So how was it, my friend? I'll share just now. But first, tell me the points. I've lost my pen. Last time's points. Dinesh, you are a bad scorer, dude. I told you, you wouldn't oblige me. Once he loses his, then he I loses. think 31. 31. What did she No, say? give me individually. No, individually, I scored 8. Sonuji scored 8. Nandita scored 7. Vishal scored 8. Shishir, you should be the scorer. I told you, Dinesh, we had this conversation many, many a times, but then you decided that since you're the boss, you wanted to be the scorer. No. And what was the name? Sorry, what was the name? Nandini Sen. Nandini Sen from Washington, D.C. Okay. Okay, now Dinesh, over to you. You know what? I written this poem in Sunday Midday, and Rajkumar Hirani called me and said if I had read this before, I'd have used it in 3 Idiots. So sweet. I'm reading the poem. It's called I, the Bull. 2 diametrically opposite views, society and me. Because society says conform, do as others do, whereas me, it says do as you want to, be as you want to. Be a doctor because my grandfather was one too? No way. I'll be a painter, a poet, a writer because I want to. Maybe on your shown path, there's contentment, there's pleasure, but it's your path, not the path I desired. It's borrowed earth, not the ground I desired. Wow. I would have lived by the dictates of my friends, parents, brother, wife, if I had more than one life, but I have only one. Let me go. Don't hold by the horn, the bull. If you insist, persist, resist, I will unsuccessfully compromise. If you insist, persist, resist, I'll unsuccessfully compromise. And that's not fair, or is it? Wow, that's so nice. That's so nice. Exactly what expression he was following in 3 Idiots. Yeah. Yeah. So, can I have this opportunity to share one more little poetry of mine? Yes, Jab yes. aapne, yeah, so it is, we generally patronize some people in life, and all of a sudden we come to know that they are the ones who are backstabbing you. It happens, it's life, so uske liye maine rakha ke तय करके रखा था सिरहाने के नीचे उस रोज़े ख्याल. नंदिता जी कहाँ हैं आप? शिशिर, I need your reaction, dude. तय करके रखा था सिरहाने के नीचे उस रोज़े ख्याल, रखते ही अपना सर सिरहाने पर उस ख्याल का होने लगा बुरा हाल. उस ख्याल का होने लगा बुरा हाल. अच्छा. कहने लगा मत रखो मुझ पर यूं अपने सर का बोझ. ख्याल मुझसे कह रहा है कि मत रखो मुझ पर यूं अपने सर का बोझ, न भर सकूंगा कोई उड़ान, न कर सकूंगा कोई खोज. तो मैंने भी ख्याल को संभालते हुए कहा कि भाई ख्याल, तुम तो महज हो एक सोच जिसे बड़े नाजों से मैंने रखा था अपने सिरहाने के नीचे, ताकि ना आ सके तुम्हारे पांव में कभी कोई मोच. पर भरने लगे तुम एक ऐसी उड़ान, जो आए ना मुझे ही रास करके मेरी ही नींदे हराम. खूब आया तुम्हें अनकहा जोश. तय करके रखा था सिरहाने के नीचे उस रोज़े ख्याल, रखते ही अपना सर सिरहाने पर उस ख्याल का होने लगा बुरा हाल. Thank you. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. So I really feel, it's so nice to write and express yourself. Dinesh, wow, what a poetry of yours. I think well-deserved breakfast you had with Raju Hirani. He didn't call me for breakfast. He called me when I was having my breakfast. Okay. Cool. I thought he invited you for breakfast. Yeah, that would have been nice. Yeah, okay. बहुत खूब, बहुत खूब लिखते हो, बहुत खूब. But he fed you something better than breakfast. Thank you, Shishir. It really means, coming from you, it really means a lot. Oh, very, very well written. Extremely well.
And you Thank speak you. so well, so that is 50% of the hurdle crossed. Sorry, come again. You speak so well. I said 50% of the hurdle crossed. Thank you, bro. बहुत ही Thank you. साफ अल्फाज हैं आपके और जी. कमाल के अल्फाज हैं. So yeah, it's beautiful to even listen to you. Thank you so much. Thank you, brother. So we move on with the with this amazing performances which are happening. So I would request Deepak Jha from Jharkhand. Deepak Babu, कहाँ पे हैं आप? तब से छिपे पड़े हैं. Deepak, are you around? I noticed that Deepak was going to travel and had to catch a train, and he had to leave. He was actually chatting and asking to go earlier. I just noticed it. I'm so sorry. I saw one of his beginning performances. I think he was fantastic. Yeah. तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं दिनेश? वो लौट आएगा तो उसको फिर चांस देना, एक मौका देना. जी. So we move on to Ritambra Mittal from Atlanta, USA. What number is he now? What number is he? 8? Well, they're all jumbled up right now. Dinesh, According to your script, it is 8. एक मिसिंग होगा ना. दिनेश, हमने उस दिन बात की थी कि अगर कोई नहीं आया तो मुझे चांस दिया जाएगा. आपको ऐसे ही चांस दिया जाएगा. आपको तो वैसे आप तो वैसे खा जाओगे यार. आप क्यों उम्मीद लगाए बैठे कि कोई नहीं आएगा? तो आपको तो ऐसा ही मौका, आप तो हक से ले सकते हैं मौका. चलिए आप शुरू हो जाएं फिर मोनोलॉग से. नहीं, एंडिंग में बोलना चाहते हैं. इस सबके एंड में मैं बोलूंगा. जब बिफोर सोनू जी द फिनाले to announce the results. साहिल, पहले प्रजा बोलेगी फिर राजा बोलेगा. क्लाइमैक्स हमेशा हीरो का होता है, आप समझे इस चीज में. चलिए आगे बढ़ते हैं सर. रिताम्बरा मित्तल फ्रॉम एटलांटा, यूएसए. रीता जी. सभी माननीय जजेस को मेरा नमस्कार. नमस्कार. जजेस जी. हेलो एवरीबॉडी. वाहेगुरु वाहेगुरु. नामृत कौर, दिल छोटा ना कर. बेटा तो तेरा ही है ना. हे रब, तू ही राखा. अब फुलकारी करने की मेरी उम्र कहाँ रही. रब, मेरे बेटे को मेरी भी उम्र लगा दे. अरे मुझे नींद क्यों आ गई? क्या बेटे ने मुझे माफ नहीं किया अभी तक? मुझसे क्या कोई भूल हो गई? तब से कह रही हूँ, मुझे हरिद्वार भेज दो. तुम अपने बहू के साथ खुश रहो. जिंदगानी के 4 दिन बचे हैं. भगवान का नाम लूंगी. अरे वहां मेरे जैसे बहुत लोग रहते हैं. साहब को फुलकारी देगा तो साहब खुश होगा. मेरे बेटे को बड़ी नौकरी मिलेगी. मेरे बेटे की तरक्की होगी. मैं बना दूंगी. जैसे बन पड़ेगा मैं बना दूंगी. फुलकारी. लट्टे दी चादर ते सलेटी रंग मैया. फुलकारी तो मैं बना दूंगी. पर ये तो बताता जा
क्यों मेरा कौन से भरूं? कि जवानी का या बुढ़ापे का। Thank you, Rita ji. Over to you, judges. Sonu. I felt it was a commendable effort. But मुझे either there were too many pauses, so it was sort of slowing down, or there was a certain, to be very honest, can I be very honest? मुझे समझ में नहीं आया. So what was she actually doing? What was the अगर वो अपने बेटे के लिए रो रही है, उसका बेटा उसको माफ करे, क्यों? उसने ऐसी क्या चीज की है जो उसका वो जो थॉट था वो मुझे एक्चुअली कन्वे प्रॉपर्ली नहीं. So I am not, I think there was, whatever it was, I got a bit confused with what it was about. So I would just give her a 4, I think. Shishir, you are not marking this, are you, Shishir? No, I'm not. Okay, so Nandita will mark. I know. I have. I missed it because I'd gone to the loo. Okay, Sahil, you mark her. Well, I felt it was a good effort. Nandita, Rita ji, पहले तो आप बैठ जाएं मेरे ख्याल से. Why don't you have a seat? Have a seat. Yeah, please feel comfortable. Yeah. So, Rita ji, जैसा कि सोनू ने कहा, there were too many gaps, and but effort अच्छा था. एक बच्चे के लिए माँ के जो कनेक्टिविटी होती है बहुत इम्पोर्टेंट, वो कनेक्टिविटी मेरे को मिली because I was very attached to my mom. So I understand what you must be going through while performing also. लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि एक तो आप कैमरे से दूर भी हो गए तो वो आधी चीजें समझ में नहीं आ रही थी. So अगर आपने माइक पहना होता, लैपेल माइक पहना होता, हो सकता है ज्यादा बेहतर इसकी कनेक्टिविटी होती. But what's all said and done, I mean, it was a good effort, so I give you 6. Thank you, sir. Mishal ji. Mishal? Yes, ma'am, very nice effort. Thank you. Your voice has a lot of, your tonality, your modulation was very nice. But नहीं समझ में आया मैम आप क्या कोशिश कर रहे थे कहना. Eventual motive क्या था, मुद्दा क्या था सीन का, वो नहीं समझ में आया. हाँ, एक दुखियारी माँ है जो अपने बेटे के लिए वेल विश करती है, उतना समझ में आया, लेकिन सीन में बाकायदा आप क्या कहना चाहते हैं वो नहीं समझ में आया. So I would give you a 5. Thank you, sir. Over to you, Dinesh. हाँ, इसके पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, जो आपने लास्ट सेमीफाइनल में सबमिट किया था, उसमें जिस तरह वो अपने सास की नकल करती है, आई थॉट दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीन्स इन द एंटायर 8-12. वो बहुत अच्छा नकल करती है. सोसाइटी में मेरा नाम खराब करेगी और करेगी, जैसा बोल रहे थे ना, मुझे बहुत पसंद आया. दैट वाज वेरी वेल डन. लेकिन इसमें मुझे समझ में नहीं आया इतना कि क्या कन्वे क्या करना चाहिए. वो अपने बेटे से नाराज है, उसको घर में नहीं आने दे रहा है. क्या प्रॉब्लम क्या है? और आपको जाने के पहले हमको बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है उसका. सर जी. हाँ, क्या प्रॉब्लम था उनको? सर, ये डॉक्टर भीष्म सहानी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, चीफ की दावत. और चीफ की दावत में एक माँ है जो सो जाती है तो वो हड़बड़ाकर उठती है. उसका बच्चा उसे जलील करके गया है क्योंकि उसको फुलकारी बनवानी है उससे, और माँ की आंखें इजाजत नहीं देती कि वह फुलकारी बना पाए.
तो वो इतनी हड़बड़ाई हुई है कि एक तरफ वो अपने बुढ़ापे से परेशान है और दूर चली जाना चाहती है, पर दूसरी तरफ वो माँ है, तो इसलिए उसे फुलकारी बनानी ही है। तो वो उस जद्दोजहद में इतनी फंस जाती है कि एक लड़का है जो इतना ज्यादा सेल्फिश है कि माँ का दर्द नहीं देखता, पर माँ है कि उसको अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती है। तो ये जो मोनोलॉग है, ये आखिरी मोनोलॉग है। जो इसकी जो कैरेक्टर है माँ, वो एंड में ऐसा बोलती हैं कि मुझे धक्का मार के जा रहा है, मुझे कहीं भेज दे, पर मैं कैसे चली जाऊं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि फुलकारी पे ही मेरे बच्चे की नौकरी टिकी है। हाँ, तो अगर थोड़ा सा हमें पहले का मालूम होता, बैकग्राउंड, we have understood this, no? और मेरे ख्याल से सोनू, बैकग्राउंड इज नॉट एनकरेज टू गिव, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर बैकग्राउंड देख, पोएट्री तो बिल्कुल बैकग्राउंड देके नहीं सुनाई जाती है। मैंने तो दिया था। हाँ, आपने दिया था। बैकग्राउंड नहीं देते पोएट्री में, द होल देन द होल एफर्ट इज वेस्टेड। सर ये मैं मानती हूँ जी, सर ये मैं जरूर मानती हूँ कि जो प्लेज होते हैं उनके मोनोलॉग, क्योंकि वो एक जगह से आ रहा है, तो जी हाँ, जैसे आपने कहा मैं बैकग्राउंड नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने शुरू में कुछ नहीं कहा। इसलिए समझ में नहीं आया। वो आपने जो इमोशन बताया मदर का, तो वो एक बहुत हमको बहुत बचपन में सुनाई गई थी कहानी कि एक आदमी अपने माँ का हार्ट निकाल के भाग रहा है और वो गिरने वाला है, तो उसकी माँ बोलती संभल। वो टाइम पे भी उसको लगता है कि मेरे बेटे का है, में इतना प्यार होता है मदर को अपने बच्चों से। हालांकि बेटे कभी कभी सेल्फिश हो सकते हैं, होते भी हैं, कभी नहीं अक्सर होते हैं, अक्सर होते हैं। तो मैं आपको साथ दूंगा। ओके, अब मैं स्कोर सुनाऊंगा क्योंकि 8 हो गए हैं ना। जी जी जी। So Renita is leading with 36. Dhanashri is next with 29. नहीं, Dhanashri नहीं. Nandini is next with 31. Yeah, wow. Dhanashri is with 29. Wow. 28 पे लोनी है और 27 पे जैद। ये स्कोर है फिलहाल। ओके। टॉप 3 में है रनीता, धनश्री और नहीं, ऑर्डर ये है रनीता, नंदिनी और धनश्री। टेस्ट और कमाल का होता जा रहा है, ऐसे कुछ बोले? हाँ बोलो ना। हाँ, गर्मा गर्म कॉन्टेस्ट बड़ा भड़कता हुआ होता जा रहा है, तड़क भड़क आ गई इसके अंदर, और लोग एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि वो ज्यादा क्रॉस कर जाए, हम आगे बढ़ते हैं। So here we are. Now I would request Rohit to play Munmun Ghosh sitar recital. Sir, they should appoint you for the Pakistan-India ODI in October, November. Yeah, I can do that. It's happening in Ahmedabad. Yeah, मजा आएगा। मैं वैसे ही बहुत प्रो धोनी हूँ, तो अच्छा, दो बातें करना चाहूंगा। एफर्ट्स अलाउड नहीं है। क्या होता है ना, मेरा कॉपीराइट में इश्यू आ जाता है, तो आई थिंक नंदिनी ने कुछ 2 एफर्ट यूज किए थे। और दूसरी बात, पॉलिटिक्स का भी प्रॉब्लम होता है, तो पॉलिटिक्स के बारे में हम नहीं बात करें। अच्छा। And before politics, what did you say? Effort. F word. F word. Sorry. Heard you. So wow. Shall we start, please? Yes. Yeah. अरे साहिल जी, आपने मुनमुन को तो इंट्रोड्यूस नहीं किया। हाँ, बट वो शुरू हो गया था ना रिसाइटल, इसलिए अच्छा, मैंने कहा बाद में कर लूंगा। बाद में। हाँ, पहले आप शुरू कर लें।
बहुत अच्छे, very nice. Wow, 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 wow. Fantastic, Munmun. तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। ये जो उन्होंने बजाया ना, उसको जी। बंगाल में बॉल संगीत बोलते हैं, BAUL. I don't know how to pronounce it exactly, but how a Bengali would pronounce it. It's like a folk संगीत. और ये बाउल और ये इसके ऊपर ये ट्यून के ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कुछ गाना बनाया था, उस पे वहां पे बंगाल में बच्चे नाचते हैं। मतलब this is a music that makes them dance. Wow, that's really nice. What talent. Yes, Sonuji. I felt like dancing too. Yeah, it is a wonderful tune. Lovely. Yeah. So let me just give a brief introduction of this lady. Her name is Munmun, okay, and Munmun Ghosh. And well, she doesn't have any more place in a hat for more feathers, because she has authored a fiction books and is a yoga instructor. She's a trained singer with a Rabindra Sangeet being her favorite, and her lifelong passion is to play sitar. So, well, I think that's really cool, really enough. And it was very nice, Munmun ji. And over to Shishir. And would you like to share something? Shishir, unmute yourself. What am I supposed to say? What? Sorry, what am I supposed to say? About the recital. No, it's not now. He's going to do it before Sonu declares the results. About the recital, I've heard we had this grab the mic contest, and I think Munmun Ghosh was present then, and she also played live. Yeah. So yes, it's always a pleasure listening to her, and sitar is one of those instruments where you can keep listening to for nights on end. Thank you. So we move ahead, and the last two finalists. Okay, Kshama Bute Shinde. Kshama ji, over to you. Thank you. Can you hear me? Yes. Clear? Yeah, loud and clear. Hi, everybody. My name is Kshama Bute Shinde. I live here in Maryland, and the monologue I'm going to present today is written by me. So I have written it, and I'll talk about it later. So here it goes. Thus notebooks, thus pens, thus pencils, thus compass box, thus birthday hats, thus pungiyan, ढेर सारी चॉकलेट्स। हाँ, क्या हो रहा है? अरे भाई, जन्मदिन की तैयारी हो रही है। किसका जन्मदिन? हमारे पीपल के पौधे का जन्मदिन। पिछले साल ही लगाया था ना, यही मंदिर के सामने रोड की साइड में। कुछ ही दिनों में 1 साल पूरा हो जाएगा उसे लगाए हुए। बस उसी की तैयारी चल रही है। यही पास की बस्ती के कुछ बच्चों को बुलाकर मनाएंगे? नहीं, केक वगैरह काटने का कोई प्लान नहीं है। हम तो हैट्स पहनेंगे, पुंगी बजाएंगे, चॉकलेट्स बांटेंगे और बस इसी तरह करेंगे सेलिब्रेट। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमने कुछ रिटर्न गिफ्ट्स भी रखे हैं, नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, कंपास बॉक्स और हलवा पूरी का छोटा सा पैकेट बच्चों के लिए। हाँ, इसका क्या फायदा है? फायदे की बात आप हमसे कर रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़े बड़े होटल्स में बड़ी बड़ी पार्टीज, बड़े बड़े केक, बड़ा बड़ा शो ऑफ, इन सब तो बताइए। और इस समय हम जो यहाँ आपसे बैठ करके बात कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या फायदा है ये भी बताइए। चलिए, अब आपने फायदे नुकसान की बात छेड़ ही दी है तो हम भी बता ही देते हैं। लीड बाय एग्जाम्पल की बात तो आपने सुनी ही होगी। तो समझ लीजिए, हम भी कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। पौधों के साथ पिक्चर्स, वीडियोस निकाल के सोशल मीडिया पर डाल देने से हमारी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं हो जाती ना। अब ये जो पौधा है जो हमने लगाया है, कल बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, तो हमें छाया नहीं देगा, फल नहीं देगा, पंछियों को आसरा नहीं देगा। ये जो बच्चे हैं
जो हमें इसका जन्मदिन मनाते हुए देख रहे हैं, क्या ये इससे कोई सीख नहीं लेंगे? और ये जो नोटबुक, पेन, पेंसिल हमने दिए हैं, क्या ये इन्हें पढ़ने लिखने की प्रेरणा नहीं देंगे? क्या पता कल को इन्हीं में से कोई बड़ा होकर एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बन जाए। तो अब आप बैठकर सोचिए और लगाइए हिसाब अपने फायदे नुकसान का। हम तो चले बर्थडे की शॉपिंग करने, और हाँ, पार्टी में आना मत भूलिएगा। थैंक यू। Yes, Sonu, let's begin with you. Why do I have to be the first one? Ladies first. You're a beautiful lady, so that's why. Please start. Shama, that was a very, very nice effort. Thank you. इस बात की दाद देती हूँ मैं कि अपने सोचा अपने सब्जेक्ट के बारे में. You wanted to speak about something that is very important in today's times. Environment एक ऐसी चीज है जिसको हम जितना निग्लेक्ट करेंगे उतना हम अपने आप को निग्लेक्ट करेंगे. It was a good effort, and I'll give you a 5 for that. Thank you. Thank you. Thank you. Over to you, Shishir. No, Shishir, no. Okay. Mishal? Yeah, thank you, sir. Entertaining, ma'am. Simple, sweet, short, precise, entertaining. अच्छे से समझाया, अच्छा टॉपिक था. ये गट्सी मूव था. लोग इतना साधारण टॉपिक चूज नहीं करते कभी. तो मुझे काफी अच्छा लगा. आपका फुल कैमरा प्रेजेंस बहुत स्वीट है. आपकी जो स्माइल, सब कुछ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था पूरे चीज में. आई गिव यू अ 7, मैन. Thank you so much. Nandita ji, where are you? Can't see her. She's left. Oh, she's left. Okay. Dinesh, Dinesh. No, you go for it. Well, it's my favorite topic. Only problem was I think the network was getting cut in between, so audio was not so audible as such. But thought was very good, because I feel it's so important. हम अक्सर ये चीजों को भूल जाते हैं. एक दो पंक्तियां मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा अभी, बस हो गया मेरी पोएट्री. कि बूंदे बारिश की गिरे जमीन पर, बुझाए प्यास हम सब की जब मगर. अब यही सोचना है हम सबको, मगर कैसे बुझाए प्यास उस आसमान की कैसे. So it's very important to have that kind of a feel towards the environment. Yes. So I think it was a great effort, and from my side, just for the thought, 7. Thank you so much. Yes, sir. Dinesh. मुझे भी थॉट बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक उसमें कॉन्ट्रडिक्शन थी. और नोटबुक क्यों रखे? मुझे तो लगता है पेड़ों से बनती है ना नोटबुक. Yes. Yeah. तो वो नोटबुक मुझे जरा खल रहा था कि वो नोटबुक क्यों रखा. वो तो एंटी एनवायरनमेंट मुझे याद दिला रहा था कुछ ओवरऑल. और मुझे थोड़ा आई डोंट नो, शायद मैं कुछ अलग मूड में हूँ या क्या, मुझे थोड़ा प्रवचन की तरह लगा. इसी बात को अगर आप किसी अलग तरीके से बोलते हैं ना, ये बहुत डायरेक्ट थी, जैसे ऑडियंस से बात करते हैं, देखो पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, वैसे लगा मुझे. हालांकि आप बर्थडे का एलिमेंट ले आए, लेकिन बहुत मुझे एलिमेंट सरफेस लगा बर्थडे वाला. लेकिन जैसे मिशाल ने कहा, यू वर वेरी इजी डिस्पोजिशन. आई मीन आपको देख के सुनने को जी करता है. आप न नर्वस लगते हैं, न ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं. जस्ट एक इक्वानिमिटी बोलती है ना इंग्लिश में, वैसे आपके चेहरे पे है. तो मैं आपको 6 दूंगा. 6 दूंगा. So the total is? Thank you so much. 25. Thank you. Thank you. Thank you. And before we move, I would just like to share that this is based on a small step taken by my mom. So she actually did plant a people plant by her house in Bhopal, and she did celebrate the birthday. So that was a it's small amazing. effort. Very nice thing to do. Juhi Chawla on a birthday doesn't accept gifts. She says, go and plant so many trees in so and so place. And even when she's gifting you,
She gives you trees to plant. Same as with Bidu. Wow, Bidu also does it. Bidu भी ऐसे करता है ना. Jagula. Yeah. He also gives you plants when he meets you. Instead of giving you bouquets or whatever, he sends you a plant, which is so nice. Okay, over to the last contestants. I mean, the finalists rather. Shampa Basu. Shampa, over to you. God bless. Hello, everyone. Hi. I'm over a hotel Wi-Fi, so hope I'm audible okay. Very much. Thank you so You're much. Wi-Fi. Thank you so much. My monologue today is about being able to respectfully disagree, not just with friends and family, but also with the people that you place on a pedestal. अमृता, मैं आपको अपने एक दिल की बात बता सकती हूँ. गुस्ताखी माफ, पर मैं आपको अमृता बुला सकती हूँ ना? मतलब आप अमृता प्रीतम हो और मैं. पर आपको पता है अमृता, जब जब मैंने आपको पढ़ा है, तब तब मुझे ऐसा लगा है कि आप मुझको मुझी से मिलवा रही हो. 10 साल की उम्र में आपने भी लिखना शुरू किया और मैंने भी. आपको आपकी लेखनी का उत्साह अपने पिताजी से मिला और मुझे भी वही उत्साह अपने पापा से. फर्क शायद इतना है कि आप इसी आशा में लिखती रही कि आप अपने पिताजी की अनचाही से चाही बन जाएंगी, और मैंने जब जब लिखा तब तब पापा ने पूरे मोहल्ले को बुलाकर सुना दिया कि देखो मेरी प्रिंसेस ने क्या लिखा है. माँ को तो आपने बचपन में ही खो दिया. आप अपनी माँ की चारपाई के पास बैठी थी, रो रही थी, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी माँ को मत मारना, मेरी माँ को मत मारना. मैंने किसी को कहते हुए सुना है कि ईश्वर बच्चों की नहीं टालता. पर कुछ ही देर में कमरे में सन्नाटा छा गया. आपकी माँ की चीखें आना बंद हो गई. आपको लगा ईश्वर किसी की भी नहीं सुनता, बच्चों की भी नहीं. आप भागकर अपने पिताजी के पास गई. आपने कहा ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं, ईश्वर कोई नहीं होता. मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ को मत मारना, पर देखो उन्होंने क्या किया. तो आपके पिताजी ने कहा, देखा क्या तुमने उसे, वो दिखाई कहाँ देता है. और आपने कहा, क्या उसे सुनाई भी नहीं देता. अमृता, कुछ महीनों पहले मैं भी अपने पिताजी के चारपाई के पास बैठी थी, शेरी ग्रोव आईसीयू में. ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पापा को मत मारना. पर गुस्ताखी माफ अमृता, उस दिन ईश्वर ने इस बेटी की सुन ली. और आज बात सिर्फ इबादत की नहीं, इश्क की भी है अमृता. आपका नाम हमेशा साहिर लुधियानवी के साथ जोड़ दिया जाता है, अमृता साहिर, साहिर अमृता, पर साथ निभाया आपका इमरोज ने. इमरोज आपके साथ आपकी आखिरी सांस तक रहे, और ऐसे रहे कि आत्मा सिहर जाती है. न कोई वायदा, न कोई बंदिश, न कोई इच्छा, न कोई ख्वाहिश, कागज पर वो रिश्ता बेनाम. तो आप ही से प्रेरित होकर अमृता, आज मैंने अपने इमरोज से कहा, क्या हम दोस्त नहीं रह सकते. तो उसने कहा, मैं तुझे अपना दोस्त कभी नहीं मान पाऊंगा. तेरी आंखों में वो रातें कभी अनदेखी नहीं कर पाऊंगा. जिस चेहरे को लेकर मैंने 1000 सपने देखे थे, उस चेहरे को किसी और का होते देख तुझे अपना दोस्त कभी नहीं मान पाऊंगा. ये फैसला तेरा है, तुझे मुबारक. मैं तुझसे दूर रहकर भी इश्क निभाऊंगा. अच्छा, तू कहती है तो चल मान लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं. पर एक बात बता, तू जो मैं हो चुकी है उससे मुझे मिलवाएगी क्या. तेरी कमर पर जो निशान अब भी बाकी है उसे दिखाएगी क्या. कभी भीड़ में मुझसे टकरा जाए तो मेरे और करीब आने के बहाने नहीं ढूंढेगी क्या. शराब की खुमारी में चांद को देखकर मुझे याद नहीं करेगी क्या. तू खुद
दोस्ती को दोस्ती तक रख पाएगी क्या? तो मैं उसे क्या कहती अमृता? तो मैंने वही कहा जो आपने इमरोज से कहा जाते वक्त, मैं तेनू फिर मिलांगी। किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरी तखय्युल दी चिनक बन के तेरे कैनवस दे उतरांगी, जन खौरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमय लकीर बन के खामोश तेनू तकदी रवांगी। पर मैं तेनू फिर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, पर तेनू जरूर मिलांगी। गुस्ताखी माफ अमृता। सी। Very impressive. तू मैनू कितों मिलेंगी? Shampa, it was very, very, very nice. Very impressive. Thank you. Yeah. Over to you, judges. The lady. Champa, you were amazing. Oh my God, Sonuji, thank you so much. It was so heartfelt, and it was a very sweet way to start it, you know, and the end had me in tears. So, Sonuji, I grew up under the influence of Tagore, right? Being a Bengali, born and brought up in Mumbai, but a Bengali kid. But somehow Punjab ki sherni, like, you know, Amrita has always been my idol. But somehow I felt like as I grow with her writings, there is a bifurcation. I start to differ from her mentality. And today, unfortunately, there is no place to differ respectfully. And I feel our generation, future, everybody needs to be there where I love you and I admire you, but I can beg to differ from you. True. I'm sorry. So nice. So nice. I think that it's really good that, you know, at least you're giving importance to that literature and your own take on it. And that's very commendable. I think it was beautiful. It was a beautiful thought. And I loved your take on it. And I think you did complete justice to it. So I will give you a 9. Thank you so much, Sonuji. Shishir. Okay. Nandita ji, she's left for the day. Vishal. And, Vishal is also left. Yeah. Vishal, are you around? I'm here. Okay. Yeah. Okay. Cool. My puppies were barking. I just didn't want disturbance, so I put it on mute. Okay. So you haven't heard it? I heard her. Yeah. Let's let Shishir sir go ahead first, no? No, Shishir. No, he's not giving. Acha. Yes, ma'am. Very well written, very well delivered. Good topic. You were confident. It was engaging. Yeah, everything was almost correct. I think there are no remarks. There are no remarks. Everything was good. I don't know if I'm correct also, but I think just once, twice when you came too close while talking to the camera, it was just a little distracting. But yeah, I would also give you a nice 8 She's or a 10. distracting woman, I must say that. 8 on 10. Good luck. Yeah, numbers, my friend. 8 How much do you on give 10. her? 8 on 10. All right. Okay, Dinesh, over to you. I loved it. She Oh nailed it. boy. She nailed it. She was amazing. Yeah. Her diction, her expressions, she just nailed it. I just loved it. I would give her a 10. Thank you so much, Dinesh. Oh my God. I have wow, fantastic. And I had told her something which she really, I don't know if she consciously. I incorporated your suggestion, Dinesh. If you know me and Shishirji knows, I'm a student first. So आप बोलोगे और मैं नहीं सुनूंगी ऐसा हो नहीं सकता. He speaks in a very honeyed voice. I said, आपकी जो फोन की आवाज होती है वो इतनी honeyed नहीं होती. आप क्यों इतनी मिठास खा रहे हैं? जरूरी नहीं कि वो जो बच्चे का किया इन्होंने एक बच्चे की इमिटेशन की थी.
मेरे यहाँ तिल क्यों नहीं, वो वहां पे सूट कर रहा था वो आवाज, क्योंकि वहां चाहिए था। पर जैसे ये वाला पीस है, उसमें इतनी मिठास नहीं चाहिए। और आपकी आवाज तो वैसे ही बहुत अच्छी है। व्हाई शुड यू गो ट्राई टू एनहांस इट? लवली, आई लव्ड इट, इट वाज सुपर। Thank you, Dinesh. Now I have to give her marks. Yes. Yeah. Okay. First of all, Shampa, I think you shocked me. Oh. Okay. Yeah. Because you were so good और आपकी diction बहुत अच्छी है। तलफ़्फ़ुज़ बहुत जरूरी होता है। जब आपकी क्लैरिटी होती है अल्फाजों में, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बड़ी ना एक रवानी में बहती है। तो आपने जैसे अपना मोनोलॉग किया और धीरे धीरे मैंने कहा यार ये तो साहिर साहब का जिक्र होना चाहिए, और आपने साहिर साहब का जिक्र किया। हाँ मुझे खराब लगता है कि हमेशा साहिर साहिर बोलते हैं। बेचारे निभाया है इमरोज ने, और हमेशा जस्ट बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी। No, but what I mean to say is it's very important, you know, कि आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी का, you know, it's आप बहुत सी चीजें कह जाते हैं, आप तंज में भी कह जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको आप एक अगली सीन बनाएं। जी बिल्कुल। So it was very, as I said, I was shocked, and नंबर की जब बात करते हैं तो मैं आपको 10 ही देता हूँ। Oh, thank you so much. Thank you, Sahir. God bless. Who wrote it? So मैंने मोनोलॉग अपना लिखा है, बट मिशाल आपको पता है, मैं तेनू फिर मिलांगी अमृता प्रीतम जी, उनकी पोएट्री है, तो मैंने उसी के साथ खत्म करना चूज किया। और जो पहले की कहानी है ना, जो वो पहले ईश्वर पे बहुत विश्वास करती थी, पर जब अमृता जी ने अपने माँ को खोया तो वो अथीस्ट बन गई फॉर लाइफ। वो मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी से उठाई है वो कहानी। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, मुझे लग रहा था इनको भी कट करना चाहिए, नहीं तो कुछ गलती कर लेंगी, कुछ गलती कर लेंगी। इतना लंबा क्यों बोल रही, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। मुझे लग रहा था इनसे गलती करनी चाहिए। नहीं, but बहुत ही नपा तुला था। It was so well measured, you know. It was very nice. जो आपने बोला ना agree to disagree, मैं किसी के साथ आर्गुमेंट में आ गया रिसेंटली। वो कहते हैं नो, either you have to see my point of view or I have to see point of view। मैं बोला ऐसे नहीं होता है भाई। Exactly. और ऐसी दुनिया में जीना भी नहीं है, ऐसी दुनिया में जीना भी नहीं है। ऐसे मेरे से तो नहीं होगा। और साहिल आपने बोला ना कि मिस्टेक हो जाएगा इतना, कि दिनेश जी ने कहा, मुझे एक बात याद है, जब हम शिशिर जी के साथ वर्कशॉप कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये बहुत जरूरी है कि तुम्हें अपने पूरे पीस से प्यार होना चाहिए। हर शब्द जो तुम लिखो ना, वो अगर वो काट दे सकते हैं तो उसको काट दो, उसको रहना चाहिए ओनली इफ इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। सो मैं आज सब एक्टर्स को सुन रही थी, इतना खूबसूरत सबने लिखा है, बट आई थिंक गोइंग थ्रू दैट वर्कशॉप विद ईदर यू नो वन ऑफ यू और विद यू नो, इट टीचेस यू हाउ टू वर्कशॉप, हाउ टू चॉप योर स्क्रिप्ट, कि यू नो तुम वही बोलो जो बहुत बहुत जरूरी है, वरना नहीं बोलो। एंड वी आर ऑल स्टिल लर्निंग, बट वो जब कोई और तुम्हें सिखा देता है या वो इनसाइट, हाँ, वो ना स्क्रिप्ट को कहाँ से कहाँ ले जाता है। वो शायद तुम लिखो, किसी और से इंस्पिरेशन लो, बट यू नो आई गिव a lot of my inspiration to Shishir ji. He's not speaking right now, but you know, he completely inspires me. And of course, thank you for the platform, Dinesh. I will speak, Shampa. How can I not have to speak? I mean, the workshops that we did, the sessions that we had, I only would like to sum it up in a manner, so to speak, is you were completely so convinced with the piece. Hence, we were convinced with what you were speaking. That conviction of yours was so strong. Whether you spoke Punjabi, whether you spoke Urdu, didn't really matter, because it was so beautifully spoken. Yes. And, yes, you are, I mean, by far a very, very fine actress. I mean, there's no question about it. When I come to the US, and I hope you damn well perform then. If you don't, I'm going to see that you perform not for anyone else. Or hopefully in India sometime, Shishir ji, when I come down, yeah, we'll do something. Yeah. Brilliantly done, Shampa. Unfortunately, I can't give you marks, but yes, points are. Yes, it was absolutely beautiful, and I do remember the last session of our workshop where we did monologues, where all of you, including Shama, you, Prerna, everyone, everybody, yeah,
you came with the intention of showing us what you're made of, completely naked in front of everyone. You didn't have any qualms, no inhibitions whatsoever. And those monologues, Sahil, were not monologues written. They were felt. They were actually true incidents that all the people, all the actors, all the 17 of them went through at some stage in their lives. Yes. So that's what made it even more interesting. Wow, that's so nice. So nice. चंपा, मैं तो 4 लाइन याद नहीं कर सकता हूँ. लोग मग करके एग्जाम देते, मैं समझ के एग्जाम देता था. मेरे को मगिंग नहीं होता था. नहीं था मुझसे. नहीं, आप ये भी देखे ना, जैसे किए कि नहीं दिनेश? हाँ, क्या हुआ? मार्क्स नोट किए कि नहीं अभी आप? हाँ किए. मैं अभी आपको सुनाऊंगा, पहले आप अपना एक मोनोलॉग. नहीं, अरे एक और है, आशा गुप्ता बैठी. हाँ, आशा गुप्ता. आशा जी, सॉरी आशा जी, मैं भूल गया. सॉरी. Our mistake, my mistake, I would say. Sahil, I will not mark Asha ji as well. Okay जी, okay. आशा जी, over to you. क्षमा चाहते हैं, आप इतनी देर वेट करना पड़ा आपको. आपने म्यूट कर रखा है. Kindly unmute, please. आशा जी, अनम्यूट नहीं हो रहा. माइक है ना नीचे लेफ्ट साइड में? हाँ, अब हो गया जी. आज जी सबसे जी पहले आप जी, सबको सॉरी, यू नमस्ते. हैव टू वेट सो लॉन्ग. जी, सबसे पहले आप सबको नमस्ते. नमस्ते. And thank you very much for giving me this great opportunity. और एक लाइन में पता नहीं आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं, बैकग्राउंड में दिख रहा है कि नहीं, मुझे अपना ही नहीं दिख रहा है, तो ये बाद में डिस्कस करूंगी. ये मेरी खुद की लिखी हुई है. तो कैन यू सी मी? यस. नहीं, थोड़ा कैमरा टिल्ट अप कीजिए. चेहरा नहीं दिख रहा. हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है. मुझे जी जी, ठीक है. फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास. क्या कहा तुमने? तुमने सब कुछ किया? मैंने कुछ भी नहीं किया. अरे मेरे भी कुछ अरमान थे, मैंने अपने अरमानों को दफना दिया. मैंने वही किया जो तुम चाहते थे. जब हमारे ऊपर इतने कर्जे थे, उस समय मैं अपनी दूध पीती बच्ची को छोड़कर शाम को 4 बजे से 10 बजे रात तक काम करने जाती थी. जब दूध पीती बच्ची को भूख लगती है ना, तो माँ के स्तन से दूध अपने आप निकलने लगता है. लेकिन तुम ये क्या समझोगे? रात को 10 बजे आकर मैं अपनी बच्ची को दूध पिलाती थी. उसके बाद किचन समेटा, सुबह फिर 6 बजे उठकर सबके लिए नाश्ता टिफिन तैयार किया. बच्चों को बस स्टॉप छोड़ के आई और तुम अपना बैग उठाए ऑफिस चल दिए. शाम को आए, गरम गरम चाय नाश्ता मिल गया, टीवी के सामने बैठ के आराम कर रहे हो. और तुम कहते हो कि मैंने कुछ नहीं किया. अरे कभी बच्चों से पूछा है कि तुम्हारे होमवर्क हुए या नहीं? तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है या नहीं? नहीं, तुम्हारे पास समय कहाँ है इसके लिए? जाओ, आज से मैं तुम्हें आजाद करती हूँ. रुपये कमाओ और रुपये चबाओ. थैंक यू.
Thank you, Asha ji. That was nice. God bless. बैठे. Are you comfortable? जी. थोड़ा कैमरा से tilt down कर लें अपने चेहरे पे. Sonu, you should go first because I think you will So- understand this better. आशा जी, जी, आपने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है, क्योंकि आपने जो अल्फाज कहे हैं, ये इन अल्फाजों से शायद इस धरती पे हर औरत कनेक्ट कर सकती है. आपकी परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग. आपके वर्ड्स resonated with me. I understand completely what a woman goes through, what a thankless job it is, how you never get any appreciation for everything that she does, because that is not considered work at all. एक औरत जो सुबह से लेके रात तक अपने पैरों पे काम करती है, उससे काम माना ही नहीं जाता. वो तो granted. So it's a topic very something that I empathize with completely, Asha ji. So I'm happy कि आपने ये monologue में ये topic चुना. So I would give you 9 for this. Wow. Thank you. Thank you. Mishal. Will Shishir sir not go first? No, you go first. I'll go last. चलिए ठीक है. Very nice, ma'am. आप सच में रो रहे थे या वो आंसू नहीं थे, क्योंकि इतने दूर से दिखाई नहीं पड़ रहा था. नहीं, सच में रो रही थी. रो रही थी. अरे वाह. सच में रो रही थी. वो इमोशन जब भी मैंने अपने आप ये लिखा, खैर बाद में बात करती हूँ, तो साधारण लिटरली मुझे रुलाई आ रही थी. मैं सच में रो रही थी. पॉइंट काफी पॉइंट पर थे आप. आपने जो शब्द इस्तेमाल किए, जैसे सोनू मैम ने कहा, अच्छे, साधारण, इफेक्टिव, और आपने जो एनर्जी भी दिखाई वो भी इम्प्रेसिव थी. वेरी नाइस मैम. आई विल गिव यू 8 on 10. Thank you sir. नहीं सर मैम. अच्छा जी, एक तो आप सबसे आखिर में आए. आप कब से पेशेंस लेवल आपका ये तो चेक हो रहा था बेसिकली. बट जो आपने अभी किरदार अपना निभाया, जैसे आपने अपना डायलॉग बोला, इट वाज वेरी नाइस, वेरी इफेक्टिव. हालांकि मुझे डर लग रहा था, जैसे कि रीटा जी के केस में हुआ था, थोड़ी ज्यादा पीछे चली गई थी तो आवाज नहीं ढंग से आ रही थी. तो अभी फॉर्चुनेटली ऑडिबल भी था और इमोशंस कनेक्ट कर रहे हैं. सो जैसे सोनू ने कहा कि it's very common. Yes, but the generation is changing, my dear. I would say I care for my wife. Happy to hear you say that. Sorry, come again. I'm very happy to hear you say that, Sahil. No, of course, I believe in it. Like I said now, when I recited my first poetry, what I felt, what was wrong with me, I had to correct it. It's very important. And while Dinesh has met my wife, she's more of a friend to me than. Yeah, they are different from the rest. Yeah, I can vouch for you. I mean, Sahil contributes a lot to the marriage. Yeah, I feel it's very important, give and take. और पैंडेमिक ने तो हमें और सिखा दिया, क्योंकि बर्तन मैं मांजता था, वो मेरी ड्यूटी थी. खाना वो बनाती थी, हालांकि she's been working for so long, but उसने कभी चूचा नहीं की. उसने YouTube से देखकर खाना बनाया और मुझे लगा, मैंने उसको हमेशा कॉम्प्लीमेंट किया. I feel it's very important in a relationship. You have to compliment each other. You have to. It is very, very important. Yes, the compatibility is important. When I absolutely correct, sir. Absolutely correct, sir. When I got married, also, yes, what I really thought was to myself, she's my friend. She understands everything. Before we got on seriously, she used to give me my other girlfriend's numbers as well, and my messages. So it was a fantastic, it
it was really amazing when I got her in my life. I really felt when she went to America and she wanted to study there, that's the time I really missed her. And I said, please come back, darling. I miss you. So, wow, so sweet. So I think generation is changing, and it's very important to respect your partner, your spouse. Oh, definitely, definitely. I agree with you. Yeah. So from my side, just to attempt this kind of a performance, 8 out of 10, man. Thank you. Thank you. Over to you, Dinesh. Yeah. Abhi, I'm not as lucky as Sahil or as giving as Sahil, so I could identify with this to an extent. No, you are very good. Have I've to known Anita for so long. Fantastic. मेरा क्या प्रॉब्लम होता है, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करने जाता हूँ तो पहले बोलते हैं आपसे तो कॉम्प्लीमेंट दिया, अरे मुझे मुंह तो खोलने दो, मुझे बोलने तो दो, तुम्हारे क्या Dinesh Chacha, this is not right. I'm going to stand up to Anu Chachi here. This is not correct. I Just know saying it. it for the sake of Of entertainment, course. it's okay. My Our Chachi whole, hardly says anything. our whole family is towards Anu Chachi, except for my grandson. The rest are all towards Anu Chachi. So, yeah, but He's come around. I like the fact that you didn't philosophize or you didn't try to sound profound. You said it जैसे होता है. मुझे तो लगा आप किचन में खड़े रह के बड़बड़ा रहे हैं अपने आप से कि देखो ऐसे हैं वैसे हैं, और एट द एंड इतना भर गया था ना, आपका यहाँ तक भर गया था, तो वो एक आपको आउटलेट मिला, आप बोले ना उसको जाओ अभी, मतलब बहुत हो गया, लिमिट होती है कुछ भी सहने की। और ये है कि बच्चों की स्कूल, मुझे मेरी वाइफ बोलती है आपको तो सिर्फ लिखना आता है, सुबह से रात लिखते, बैंक में कौन जाएगा, दवाई कौन लाएगा, केमिस्ट के पास कुछ नहीं, आई एम राइटिंग, आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब। But she said that is, you can make out, you're not pretending, you're so meditative while writing. I don't even feel like disturbing you. लेकिन मुझे करना चाहिए ना, बल्ब बदली करना चाहिए, बल्ब बदली करने को, लेकिन उसके अलावा कुछ और ज्यादा काम हुआ बल्ब से तो फिर मैं नहीं कर पाता, फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। तो मैं ही She's करती very हूँ। considerate. She's very considerate, I must say. Right, so I will give you an 8 also, maybe 8.5. 8.5. Thank you sir, thank you. तो मैं ये कहानी मैंने खुद लिखी है और अपने मन से लिखी है। इसमें एक लाइन बिल्कुल सच्चाई है कि जो मैंने बोला ना कि हमारे ऊपर कर्जे थे और मैं काम करने जाती थी, लिटरली आई डिड, एंड वो जो बच्ची को जब भूख लगती है ना, it did happen with me. That's the only line is true. It happened with my life. And it's not that somebody forced me. I wanted to help family. And that's why I did. एक ही लाइन सच है, आप बोल रहे हैं आप अपने हस्बैंड को ढक रहे हैं क्या? नहीं मैं देखिए सच्चाई ये है, जर्नलिज्म चालू हो जाएगा। नहीं सच्चाई मैं पूछने वाला था साहिल, ये आप बीती है कि आप देखी है? साहिल जी, I wish कि आप जैसे सभी इंसान सोचे, and this is not just for men and women, it goes both way. As you said, it has to go both way. I agree with you, but I know for a fact, we don't want to go there. I know many families are like that. So thank you for giving me this great, wonderful opportunity. मुझे एक बात बताइए, कोई हस्बैंड्स की तारीफ करता है तो वाइफ ऐसे क्यों बोलती है, अरे इनके साथ 2 दिन रह के देखो? Everyone says that, even the men say it. Which is true. बोलते हैं कि नहीं, आप बताएं। हम incorrigible होते हैं। Dinesh ji, sadly, my wife would say something like that too. So it's not a hetero marriage where these conversations happen. No, I agree. It's not gender. It's not gender. It's not gender at all. Okay, now we're coming to the end of the session. But before that, I would request my friend, Mr. Shishir Sharma, sorry. एक और लगाओ? हाँ, लगाओ. Here you go. There you are.
Okay, my friend, I would like to, I would request you to say your monologue, which everyone has been waiting for. I will. So before I actually start, I want you guys to get confused. These are some of the lines that I'm going to say are from Macbeth, and some of the lines are from a film that I had done in Singapore, which is called Dvaita, which is also based on the Shakespearean kind of performance that I have done. There I had played a double role. I will start with some lines from Macbeth, and then it will get into the lines that I had performed for a film called Dvaita. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace. From day to day, to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays are flighted fools, the way to dusty death. Out, out, brief candle. Life is but a walking shadow. A poor player that struts and frets his art upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. My occupation completely absorbs me. I have no time for anything else. The devotion to God has reduced me to poverty. Men of Athens, you have condemned me to death. And for those who are my friends, and those who have voted to acquit me, let me tell you that death is the best thing. The hour of departure has arrived. We must go our own ways. I to die, you to live. Which is better? Only God knows. Very good, fantastic, superb. No, thanks so much. You didn't perform before. It was amazing, Shishirji. नहीं तो सबकी छुट्टी हो जाती. Wonderful, wonderful. So sweet. So amazing. Amazing. पहचान उसके pauses में होती है. क्या कहा मिशाल? कहते हैं एक्टर की पहचान उसके pauses में होती है. Finest example. Wow, fantastic. Super, super. मिनट आउट से अरे नेक्स्ट डायलॉग नहीं है उसके एक फ्रिक्शन सेकंड में आप डिलीवर कर देते थे. कलाकार है भाई. We are learning, sir. Yeah, it's a learning experience when you're working with people like him. Sonu, Yes, would you like to share something? it was amazing. I'm so glad to hear just to listen to this, Shishirji. Thank you so much, sir. That's nice. That's nice.
Okay, now, as we all know, the session is coming to a close. So can we know the scores, please? First, let me recognize my handwriting. Wow, चश्मा पहनना दिनेश. नहीं, मेरा डॉक्टर्स का हैंडराइटिंग है ना, मुझे लोगों से पढ़ना. 3, 4 तो मिल गया, अभी 5वां ढूंढूंगा. Okay. If somebody contests this, please let me know any of the participants. मैथ्स तो अच्छी है, लेकिन नाम में एक दूसरे के पास चले गए. नंबर 5 पे है धनश्री. Wow. Scaring the contestants by saying that. Huh? You're scaring the contestants by saying that. धनश्री को मिले हैं नंबर 8 पास चले गए. ये उनके पास मिस है इंडिया कॉन्टेस्ट हो रहा है. Number 4. 29. नंबर 4 पे है नंदिनी. Wow, Nandini. God bless. अभी दिल थाम के बैठी. नंबर 3 पे है आशा जी with 33.5. Wow, आशा जी. आउट ऑफ द पार्क मारा है इन्होंने. बहुत खूब आशा जी. Thank you, thank you. नंबर 2 पे है जिसने हमको डरा दिया, रनीता. और नंबर 1 पे है शंपा. Shampa. Wow. Congratulations to everybody, not only these 5, whoever participated. Congratulations. Huh? Thank you so much, Dinesh, for the opportunity. Well, thank you, Shama. And who am I supposed to give away your gifts to, Shampa, this time? Whoever you choose to. Shampa always tells me, gifts de do kisi ko, zarurtmand wala. I think she needs a gift for that also. Oh, that's so nice. Yeah, last time she gave you a gold coin, now she's giving you a sari worth 10,000 rupees. So I'd like to thank, I'll come to you all later on, first sponsors. They are very big business. Sponsors are Nandiat Puri and Om Puri Foundation, including Ishan Puri. Bimal Roy's son Joy, Touch of Joy, for the sari I told you, but you're not wanting to take. And what's the first prize? Yeah, these are the 2. And then there's a gift box. Gift sets from my Happy Box. And then there are books from me. If you value them, that's good. Then there are books from Nandita. And yeah, and she'll give certificates of commendation to everybody. Very nice, yeah. See? Thank you. You realize something? All the women are from the US. Yeah, most of them, yeah. I know. Honestly. भारत की नारी को क्या हो गया? एक है रनीता. भारत के ही हैं. अमेरिका में है. Still so Indian. इंडियन डायस्पोरा है, इनको कम मत समझिए आप. बाहर Thank you, Sahil. मोदी जी भी जाकर करते थे. Thank you, Indian diaspora. So Indian diaspora is making us proud. Fantastic. Super. So can I just move ahead? So I would like to congratulate the winners. Heartfelt thank each of the esteemed judges. Shishir ji, Sonu, Vishal, fantastic. And of course, Nandita ji as well. And I wish all the talented people everywhere. But before you sign off, I want to thank all these people. Yeah, please, go ahead. I'll begin by thanking you for coming at the last minute when my host was not coming. You decided to. And between you and me, we don't discuss money ever. So it was wonderful of you to come. So it is an honor, brother. It is an honor. Thank you. Of course, Shishir ji has supported every enterprise of mine. I don't call him G. He doesn't call me G. So the G is out. So everything I start, I always ask him, "Aap karoge kaisa?" Puchne wali kya baat hai? I'm there now. So he's so sweet. So sweet. And who else is there? Sonu Walia is my sweetheart from how many years? From the 90s, right? Yeah. Immediately after Khoon Bari Mang. And we have spent a lot of time together, not necessarily doing articles, but just speaking with each other. So sweet. And one image I have stuck in my head, I don't know why, Sonu, is you at the piano bar at the party.
We had a party there. I don't know if you remember. I remember. You Piano bar. remember, yes. And all these beautiful contestants, I'm very bad at remembering names. So if I name 6 and don't remember the other 5, that's very bad. Wonderful. And there are some people who are not here. I would like to thank, of course, Om Puri Foundation for supporting this. And Kalpana here, she's not here. She's been a very big supporter. Then there's one girl who's a fan of Mishal, but she's become my supporter. Her name is Nilanjana Sen Gupta. Wow. Everything I do, she supports me. If she comes to know I'm doing this contest, she'll put up 10 ads. Next day Insta पे शुरू हो जाएगा, 10 दिन तक ads आएंगे. तो ऐसे लोग भी होते हैं जो क्या कहीं से आते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं. You know, but for the while they are here, it's beautiful. So yeah, thank you all you wonderful people. We had I want to know how you felt. Sonu, how did you like it? Thank you, Dinesh. It was really, really wonderful to be here. I remember you used to often call me for your, every Thursday you had this reading session, you know? Yes. Remember? Where everybody sat and discussed books, and I could never make it for it. And I'm so glad that I finally did make it for something. And I'm just But very... we have one thing in common. We both used to read Billy Bunter. Oh, yes. We're Billy Bunter. Yeah. I'm really, really happy. I've enjoyed myself tremendously and wonderful to you, Sahil, after so many years. And, Sahil, are you listening? Yeah, I'm listening. I'm listening. And let me tell you, Sahil, that Lal Dupatta Malmal Ka was a cult film. Yeah. Thank you. Thank you. And these were songs that I have sung like for. Well, you can go on the YouTube and listen to the remix. You know, these kids, I don't think they were born in that era as well, but still they're performing on that. Kya karte the sajna. I mean, I love the remixes. It's so amazing, you know. So after seeing that film, Sonu, I had written Baat Hai Sahil Mein. How sweet. That's where our association began. I mean, it was so kind of him. Why y'all all only talk about Khunbari Maang? Ma'am was in Tridev also, no? If I'm not mistaken. No, she didn't do Tridev. She did Khel. Khel. She was amazing in Khel. I loved Khel. It's one of my favorite films. Three Dirty Scoundrels. Yeah. Yeah. What a film that was. What a film. And you were fantastic. And Mishal, I don't need to thank. Khoon Ka Rishta. Of course not. It's all a learning experience. It's all lovely. Wonderful So, can I wrap up, my friend? Yes. Shishir sir, I need to tell you what a lovely job you did in that film where you're playing the Pakistani officer. It just recently released in one of the... Razi. No, there's some film which released later. Very recent. Or maybe I saw it recently. I'm so bad. Codename Mission Majnu, correct. Codename Tiranga. Correct, Mission Majnu. Which one? Mission Majnu, right? Mission. Fantastic, sir, superb. I think I saw it twice. Second time for you. I have to see it then. Yeah, for me it was the learning. For me it was all learning, all study. Fantastic, sir. Too good. Thank you, Michelle. So I would like to wrap. Does anybody remember the jalebi ad? Yes. Does anybody remember jalebi? Of course. It was Shishir ji. साहिल, मुझको आपसे एक शिकायत है. जी बोले. आपने कहा था मैं 2 घंटों में चला जाऊंगा. अभी तो कितने हो गए? सर मेरी बीवी बुला रही है पीछे से, आके इशारा करके चली जाती है. उसको थोड़ी देर में आ रहा स्वीटा. चलो आपको रोकेंगे नहीं, आप अपने स्वीटहार्ट के पास जाओ. Continue being the ideal couple. We need ideal couples. No, it's okay. Dinesh, we will be able to see this offline on your channel later on, right? Share it with our friends. Actually, it's already on. You'll go and see now. It's live? Okay. Live. Right. Sonu ji, thank you so much. It was such Thank you so much. So lovely seeing you. So Sonu ma'am, thank you so much. Sahil, it was an absolute pleasure meeting you after so many years, some 10,000 years. Yeah, really? You've become... You want to make yourself obsolete, and me too, man. We have become fossils. He's amazing.
Sonu, it's lovely seeing you. Would like to connect with you. I'll take your number from Dinesh. Thank you, guys. Thank you so much. Cheers. Vishal, God bless. And you have to make me meet Priya Bapat. Yes, surely. मेरा पहले तो उसको कॉम्प्लीमेंट कम्युनिकेट कर दो ना, बोलो मुझे बहुत पसंद आया उसका. मैं जरूर अभी उसको मैसेज कर देता हूँ. हाँ. Thank you for the platform. I'm looking forward to workshops. Wow. Yes, God bless everyone. Yeah, Cheers. Thank you. Let's clap for ourselves. Thank you so much, if I can, I would like to connect with all of you again. Yes, if I can, if there's an opportunity. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. 2024. Cheers. 2024. Bye-bye. Thanks, sir. Cheers. Cheers. I'll say I'm going to drop in someday to say hi to you in your office. Dude, I've been passing anytime. that. Yes. Yep. Okay. Okay, bro. Cheers. Cheers.